Okay, so here we are going to discuss some important questions of communication system. First of all, my name is Deepak Misra. Uh, I am I completed my MTech from NIT Hamirpur, and I also am pursuing my PhD. Uh, so first of all, we will start from एनालॉग कम्युनिकेशन. सो एनालॉग कम्युनिकेशन में सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे यहाँ से कुछ क्वेश्चंस लेंगे जो कि इम्पोर्टेंट है और दैट विल बेस्ड मेनली ऑन लाइक आवर मॉड्यूलेशन एंड डी मॉड्यूलेशन. सो ओके ओके सो राहुल प्रभु ओके हेलो. सो लाइक अगर आपको कुछ भी डाउट रहता है देन यू कैन सिंपली आस्क हियर और मैं कोशिश करूंगा लाइक सॉल्यूशन जितना भी लाइक सिंपल हो सके. सो वेट कर लेते हैं थोड़ी देर और एंड देन विल स्टार्ट फ्रॉम दिस क्वेश्चन. अगर आपको स्क्रीन दिख रहा है ओके then you can start to solve you can send the solution of this first answer of this first two question. Okay, this is common data type question. अभी तो फिलहाल common data type questions नहीं पूछते हैं लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है तो इसी तरह के क्वेश्चंस कॉमन डेटा टाइप तो नहीं रहेगा इस तरह के ही क्वेश्चंस को अलग अलग पूछ सकते हैं या फिर मल्टीपल चॉइस में भी पूछा जा सकता है. ओके एक्चुअली दिस ओके वरुण जोशी. तो ये आपका लाइक एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन पोर्शन से है क्वेश्चन. ओके एग्जैक्टली वी डोंट हैव द इंफॉर्मेशन कि किस ईयर में पूछा गया है बट ये मॉड्यूलेशन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन से है. ओके और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल दिया हुआ है. ओके इट इज गिवन लाइक दिस. This is the given signal. Okay, this is the given signal. यहाँ पे आपका FC that is this is our FC. What is FC? It is 10 raised to 5 जो कि आपका carrier frequency है. FC is our carrier frequency and the first portion is we have to find कि what is the modulation index. Okay, आपका modulation index क्या हो जाएगा? You have to find. कैसे करेंगे find? If you have आपने देख लिया ये क्वेश्चन देख लिया. एनीवन गॉट एनीवन आंसर? किसी को मिला क्या? मिला क्या किसी को आंसर? विच ऑप्शन इज करेक्ट? एनीबॉडी? देखिए यहाँ पे क्या है सबसे पहले ये
सिंपल लाइक अगर आपको स्टैंडर्ड फॉर्म पता है लाइक एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म, तो स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन तो वहां से कंपेयर करेंगे तो जनरली क्या होता है, वी हैव AC 1 प्लस, ओके, AC 1 प्लस म्यू cos 2 pi FMT cos 2 pi FCT. Okay, so this is the standard form you can say. Okay, तो यहां से अगर हम लोग कंपेयर करेंगे तो लाइक ये कब होता है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है आपका जब आपका सिंगल टोन है, फिर सिंगल फ्रीक्वेंसी रहता है, व्हेन इट इज सिंगल फ्रीक्वेंसी और लाइक सिंगल टोन। बट अगर मान लीजिए इट विल बी मल्टी टोन, अगर दो फ्रीक्वेंसी पता प्रेजेंट है, सो व्हाट विल बी द एक्सप्रेशन, इट विल बी लाइक दिस, AC 1 plus mu1 cos 2 pi FM1t plus mu2 cos 2 pi FM2t into cos 2 pi FCT। ओके, सो ये एक्सप्रेशन हो गया आपका जब आपके पास टू फ्रीक्वेंसी लाइक मैसेज सिग्नल में दो फ्रीक्वेंसी प्रेजेंट है। तो अगर इसको आप कंपेयर करेंगे, ओके, जब आप इसको कंपेयर करेंगे okay, so this is also like Varun, this is also from IN, okay, like आपका ब्रांच अगर IN है, so like ये भी क्वेश्चन है और आगे भी मैं बता दिया करूंगा। ओके, सो यहाँ पे देखिए, इफ लाइक इफ विल कंपेयर ना तो आपको क्या मिल जाएगा यहाँ से, यू विल गेट ना कि mu1 इज इक्वल टू, फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक यू हैव टू टेक लाइक इस फॉर्म में लिखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सो लाइक आई एम एडिंग अ पेज हियर, सो expression is given like this, it is 20 plus 2 cos 300 pi t plus 10 cos 6000 pi t into cos 2 pi fct and fct is given। okay, so यहाँ पे देखिए, what we'll do, we'll take this 20 common, okay, 20 कॉमन ले लेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 1 प्लस दिस विल बी लाइक 0.1, okay, this will be 0.1 cos 3000 pi t plus this will be 0.5 cos 6000 pi t into cos 2 pi fct। ओके, ये हो गया आपका। अब यहाँ पे देखिए, अगर हम लोग कंपेयर करेंगे जो स्टैंडर्ड फॉर्म लिखा था वहां से, सो विल गेट हियर mu1 इज इक्वल टू 0.1 एंड mu2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, mu2 विल बी 0.5। ओके, so like what will be the resultant modulation index, okay, it is mu which is equal to, we know na कि mu1 square plus mu2 square का root। okay, so we can calculate like this, we can calculate like this, so आप इसको calculate कीजिए और आपको mu मिल जाएगा, that is 0.509 will get, कितना मिलेगा, 0.509। ओके, यहाँ पे देखिए, सबसे पहले तो लाइक वी कैन एलिमिनेट दिस बी एंड डी, बी और डी तो हो नहीं सकता है बिकॉज लाइक मॉड्यूलेशन इंडेक्स इज नॉट गोइंग टू बी नेगेटिव, देन विल गो फॉर लाइक आइदर ए और सी विल बी देयर। सो यहाँ पे देखिए, जब आप इसको सॉल्व करेंगे लाइक ए को देखेंगे तो ए इज आवर, कितना आया था आंसर, इट इज 0. दिस विल बी 0.509,
Okay, so we'll go for this A. So A is the correct option. A is the correct option. Okay, so now we'll go for the second question. Okay, यहाँ पे देखिए second question में क्या है, कुछ this power like power calculate करना है आपको, total power. Okay, so we have to find the ratio of sideband power, that is just consider this is sideband power PSB upon the total power PT. Okay, ये पूछा जा रहा है. Okay, so क्या है यहाँ पे देखिए, वी नो ना कि दिस इज अ टर्म लाइक क्या होता है आपका मॉड्यूलेशन एफिशिएंसी. व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मॉड्यूलेशन एफिशिएंसी? इट इज रेशियो ऑफ sideband power and total power. So this PSB upon PT is our modulation efficiency, which is equal to mu square upon 2 plus mu square. Okay, directly we have a formula for this modulation efficiency. Okay, आपके पास डायरेक्टली फॉर्मूला है मॉड्यूलेशन इफिशियंसी के लिए. सो इसको आप कैलकुलेट कीजिए, क्या मिलता है आपको. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस म्यू स्क्वायर? म्यू स्क्वायर का वैल्यू कितना मिला था? सो म्यू स्क्वायर अगर यहां से आप कैलकुलेट करेंगे, म्यू स्क्वायर इज 0.26. विल गेट दिस 0.26. सो यहां से आपको मिल जाएगा दिस इज 0.26 अपॉन इस 2 प्लस 0.26, मतलब कि ये हो जाएगा 2.26. ओके, तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा? फाइनली विल गेट दिस 26 अपॉन 226. विल गेट दिस, ये मिलेगा. यस, actually maybe correct, it will be like Rahul Prabhu is replying as a 0.2. Yes, it is 0.259, or like we can say 0.26. So like option is given as a ratio of, so B is the correct option, we can see here. Okay, so B option is the correct. We'll go for B. B is the correct option for this. समझा आपको यहाँ पे? If you have any doubt, then you can ask. Okay. चलिए. So this is the common data for question number 1 and question number 2. Now we'll go for the question number 3. Okay, we'll go for question number 3. Okay, question number 3 में क्या पूछ रहा है देखिए. We have a modulated signal. We have a modulated signal. यहाँ पे देखते रहिएगा. DSB modulated signal is given like this. यहाँ पे देखिए, this is our DSB modulated signal, that is xt is equal to a mt cos 2 pi fct. Okay, which is mixed with the local carrier. यहाँ पे देखिए, दिस इज द लाइक लोकल ऑसिलेटर से जो भी आपका फ्रीक्वेंसी मिल रहा है, और लाइक लोकल कैरियर वी कैन से, व्हिच इज इक्वल टू cos 2 pi fct plus theta is given. Okay, and
द आउटपुट इज पास थ्रू, यहाँ पे देखते रहिएगा, द आउटपुट इज पास थ्रू और लो पास फिल्टर with the bandwidth equal to the bandwidth of message signal। जो भी आपका यहाँ पे लो पास फिल्टर है, जो भी आपका लो पास फिल्टर है उसका बैंडविथ कितना है, इट इज इक्वल टू द बैंडविथ ऑफ द मैसेज सिग्नल एम्प्टी। ओके, जो लो पास फिल्टर है उसका बैंडविथ कितना है, बैंडविथ उसका है इक्वल टू द बैंडविथ ऑफ द मैसेज सिग्नल। So like our message signal is m of like empty, empty is the message signal. Okay, what we have to find, we have to find if the power of the signal at the output of the low pass filter is p out। okay, जो भी आपका फिल्टर से पास कर रहे हैं जो भी सिग्नल, उसका आउटपुट कितना है, उसका आउटपुट जो भी मिल रहा है उसका जो भी पावर है पी आउट, और जो मॉड्यूलेटेड सिग्नल है उसका पावर कितना है, like this is p mu, we can say p mu। So what we have to find, we have to find the ratio of these two। okay, we have to find the ratio of these two। कैसे करेंगे सॉल्व, कैसे करेंगे सॉल्व, देखिए ओके। सो क्वेश्चन समझा आपको, यहाँ तक क्वेश्चन समझा आपको, चलिए अगर कुछ भी डाउट है देन यू कैन आस्क। उसके बाद से लाइक क्वेश्चन समझा, देन लाइक वी हैव द गिवन डेटा और उसको हम लोग करेंगे प्रोसेस एंड विल गेट द रिजल्ट। तो सबसे पहले हम लोग नोट कर लेते हैं जो भी हमारे पास डेटा दिया हुआ है। ओके, तो यहाँ पे देखिए आपका जो भी मॉड्यूलेटेड सिग्नल है, ओके, मॉड्यूलेटेड सिग्नल दैट इज x of t is equal to a mt cos 2 pi fct। so this is our modulated signal। okay, और जो लोकल कैरियर है वो जो सिग्नल है दैट इज xl of t। ओके, ये कितना दिया हुआ है, दिस इज cos 2 pi fct plus theta। ओके, ये दिया हुआ है एंड द अदर इंफॉर्मेशन इज गिवन एज अ जो फिल्टर का बैंडविथ है। ओके, हियर द बैंडविथ ऑफ फिल्टर that is low pass filter is equal to the bandwidth of मैसेज सिग्नल। ओके, सो सबसे पहले तो लाइक अगर आपका जो मैसेज सिग्नल यहाँ पे दिया हुआ है इसको हम लोग यहाँ पे देखते हैं, मैसेज सिग्नल mt इज इक्वल टू what we'll consider, we can consider it as a am cos 2 pi fmt। ओके, कर सकते हैं ऐसा। सो दिस इज आवर मैसेज सिग्नल mt। तो आपका बैंडविड्थ कितना हो जाएगा, बैंडविड्थ ऑफ मैसेज सिग्नल कितना हो जाएगा, इट विल बी 2fm, इट विल बी 2fm। सो बैंडविड्थ ऑफ मैसेज सिग्नल 2fm हो गया, यानी कि बैंडविड्थ ऑफ फिल्टर कितना हो गया, इट विल बी आल्सो 2fm। समझा। सो अब देखिए यहाँ पे वी हैव द मॉड्यूलेटेड सिग्नल फर्स्ट। सबसे पहले तो लाइक हम लोग मॉड्यूलेटेड सिग्नल को प्रोसेस करते हैं। यहाँ पे देखिए x ऑफ t को ऐसे लिख सकते हैं, x ऑफ t दैट इज a इंटू am cos 2 pi fmt cos 2 pi fct। ओके, जब इसको सॉल्व करेंगे आप तो यहाँ पे देखिए we'll get here a into am by 2, okay, into cos
2 pi fc plus fmt plus cos 2 pi fc minus fmt, ये मिलेगा आपको। ओके ओके, यस राहुल, इट इज लाइक नॉट नेसेसरी कि मैसेज सिग्नल, और जरूरी नहीं है लाइक कि कोसाइन सिग्नल ही हो, लेकिन लाइक हमें और कुछ और कोई सिग्नल भी लेंगे तो आंसर मिलेगा, बट लाइक सिंपली जैसे जिस जिस वर्ड से सिंपली हमें आंसर मिल जाए उसको ही लेंगे। ओके, उसके लिए ही जाएंगे। लाइक हम लोग कुछ ऐसा एक टीडियस सिग्नल ले लें जिससे कि फाइनली हमें आंसर तो मिलेगा, बट लाइक थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग रहे, तो इससे अच्छा है कि जितना आसानी से मिल जाए, इतना आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, इसलिए द स्टैंडर्ड signal will be like cosine signal. Okay, so that's why we'll assume here message signal as a am cos 2 pi fmt. Okay, so यहाँ पे देखिए आपको x of t मिल गया, x of t ये मिला। अब देखिए क्या करना है आपको, क्वेश्चन में जैसा बोला गया लाइक आउटपुट क्या मिलेगा आपको, आउटपुट इज योर, जस्ट कंसिडर कि आउटपुट, आउटपुट नहीं मतलब पहले मिक्स कर रहे हैं हम लोग सिग्नल को। सो यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो लाइक व्हेन वी मिक्स्ड, तो जब मिक्सिंग करेंगे यानी कि एक्स टी इंटू एक्सएल टी, इन दोनों को मिक्स करेंगे। ओके, इन दोनों को जब मिक्स कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, सो एक्स ऑफ एक्स टी मिल गया हमें, दैट इज ए एम बाई टू, इट इज कॉस 2 पाई एफ सी प्लस एफ एम टी प्लस कॉस 2 पाई fc minus fmt. Okay, this is our x of t, and then xl of t कितना है, that is cos 2 pi fct plus theta, ये है आपका। ओके, ना जब इसको सॉल्व करेंगे, ओके जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, देखिए a am by 2, ओके, एंड दिस विल सिंपली मल्टीप्लाई, और आपको यहाँ पे मिल जाएगा cos 2 pi fc plus fmt into cos 2 pi fct plus theta plus cos 2 pi fc minus fmt into cos 2 pi fct plus theta। ओके, ये मिलेगा, ये मिल जाएगा। देन again we'll apply the identity, the formula, the cos a cos b। ओके, सो 2 cos a cos b, सो वहां पे आपको क्या मिल जाएगा, देखिए अगर इसको सॉल्व करते हैं हम लोग तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा a इंटू ए एम बाई 4। ओके, जब इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा cos 4 pi, it will be like this, cos 2 pi into fc plus fmt plus theta। ओके,
प्लस कॉस 2 पाई fmt माइनस थीटा, ओके, प्लस कॉस 2 पाई 2fc माइनस fmt प्लस थीटा प्लस कॉस 2 पाई fmt प्लस थीटा, ओके, ये मिल गया। अब देखिए, ये हो गया आपको जब मिक्स कर दिए हम लोग। अब देखिए, जब हम लोग सिग्नल को मिक्स कर देंगे, ओके, जब आपका सिग्नल मिक्स हो गया, लाइक यहाँ पे दिस इज एक्स टी एंड दिस इज लाइक मल्टीप्लायर वी कैन से, एंड दिस इज योर एक्स एल ऑफ टी। यहाँ पे जो भी आपको सिग्नल मिला वो पास हो जाएगा फिल्टर से, दैट इज लो पास फिल्टर। एंड ये आउटपुट जो वाईटी मिलेगा वो क्या मिलेगा, देखिए, सबसे पहले इसका जो बैंडविड्थ है, इसका बैंडविड्थ है दैट इज 2 एफ एम, ओके। तो जो भी फ्रीक्वेंसी है, जो भी सिग्नल जिसका फ्रीक्वेंसी 2 FM से ज्यादा होगा, दिस फिल्टर इज नॉट गोइंग टू अलाउ, ओके, दिस फिल्टर इज नॉट गोइंग टू अलाउ। सो व्हाट हैपेंस, सी हियर, इस मिक्सिंग सिग्नल में देखिए, जो फर्स्ट पोर्शन है ये, this is not going to pass, okay, this is not going to pass, okay, because this is not going to allow by the filter। ये जो cos 2 pi fc, this second we can say second signal cos 2 pi fmt minus theta, it will pass through the low pass filter. Similarly, this is also not going to allow by the low pass filter, the third one, okay, and the fourth one is going to be allowed, fourth one will be allowed। सो फाइनली आउटपुट में क्या मिलेगा आपको, आउटपुट सिग्नल क्या हो जाएगा, देखिए, द वाई टी विल बी इक्वल टू, इट विल बी लाइक ए इंटू ए एम बाई 4 एंड दिस विल बी कॉस 2 पाई एफ एम टी माइनस थीटा प्लस कॉस 2 पाई एफ एम टी प्लस थीटा, ओके। Yes. Deepraj is asking for the formula list. Okay, I will write. Generally used formula identity for like cos A cos B या फिर like cos A minus B या फिर cos A plus B क्या होता है फॉर्मूला, वो मैं लिख देता हूँ, अभी उसको लिख दूंगा। बट चलिए पहले सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चंस को। तो ये मिला आपको आउटपुट सिग्नल में, ओके। इसको और भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, लाइक दिस विल बी ए एम बाई 4, और यहाँ पे देखिए ये कॉस, यहाँ पे भी लाइक सॉल्व करने के लिए आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, ओके। सो दिस विल बी कॉस 2 पाई एफ एम टी माइनस थीटा, ओके, या फिर लाइक कॉस ए माइनस बी पता होना चाहिए, ओके। तो कॉस ए माइनस बी क्या हो जाता है, यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा आपका कॉस 2 पाई एफ एम टी इंटू कॉस थीटा प्लस साइन 2 पाई एफ एम टी साइन थीटा, ये हो जाएगा, ये फॉर्मूला हो जाएगा। सिमिलरली अगर सेकंड पार्ट के लिए जाएंगे तो हो जाएगा आपका, और दिस विल बी लाइक यहाँ पे cos a प्लस b का भी फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। तो ये हो जाएगा आपका cos 2 पाई एफ एम टी cos थीटा माइनस साइन 2 पाई एफ एम टी साइन थीटा, ये। तो यहाँ पे देखिए ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और आपको फाइनली मिल जाएगा यहाँ पे a
AM by 2 cos theta into cos 2 pi FMT. ओके, ये मिल गया आपको like output of filter we can say, or like filter signal, like output signal. ओके, अब क्या करना है आपको, इसका पावर निकालना है. ओके, सो दिस इज आवर P out, दिस विल बी आवर P out. ओके, सो कैसे फाइंड करेंगे पावर, कैसे फाइंड करेंगे? So like this is amplitude. Okay, our peak amplitude. So what happened? Power का formula VA square by 2R. R we can neglect, as a, like we can consider कि R का value 1 है, so it will be like VA square by 2 or like VM square by 2. तो यहाँ पे ये देखिए, ये कितना हो जाएगा? Power will be like AM cos theta by 2. So like here the V is VRMS. Here the V is VRMS. Okay, so VRMS will be VM by root 2. तो यहाँ पे आपको root 2 include करना पड़ेगा upon 2. ओके, तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा? A square AM square cos square theta upon this will be 8 by like, so 8 into 2 will be 16 will get here. ओके, तो P out का like output power कितना हो गया? This. And the like P mu is what? Your like modulated power. ओके, modulated signal का जो power है. ओके, तो वो कितना है? So it is, यहाँ पे देखिए, ये जो मॉड्यूलेटेड सिग्नल को हम लोग सॉल्व कर रहे थे, यहाँ पे ये यहाँ से मिलेगा आपको मॉड्यूलेटेड सिग्नल का पावर. दिस इज आवर मॉड्यूलेटेड सिग्नल. ओके, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ से पावर कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा? विल गेट हियर दिस इज आवर PU. ओके, PU कितना हो जाएगा? फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक 2, क्योंकि यहाँ पे दो सिग्नल है, एक ये है और एक ये है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं. पावर इज गोइंग टू बी लाइक, जो एक का होगा वही दूसरे का होगा, इसलिए हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे. और यहाँ पे A इंटू AM बाई 2 रूट 2 स्क्वायर बाई 2. सो कितना मिल गया आपको? और यहाँ पे we'll get here A square AM square by 8. Okay, we'll get this. ये मिला. So this is our P. So PU मिल गया आपको. So we'll write here this is A square AM square by 8. So we have to find the ratio. To find the ratio P out by PU. So it is A square AM square cos square theta upon 16 into 8 upon A square AM square. Okay, so we'll get here 1 by 2 cos square theta. Finally, we'll get this. Okay, half cos square theta.
Okay, so we will go for option B. Sorry, option D. Okay, सर एक पावर कैलकुलेट करेंगे, सो देखिए पावर वी हैव टू कंसिडर आरएमएस वैल्यू ना, पावर के लिए वी हैव टू टेक आरएमएस वैल्यू. सो लाइक formula is what, like v square by r. ओके, फॉर्मूला इज v स्क्वायर बाई r. तो यहाँ पे जो v होता है, ये जो v है, दिस इज द आरएमएस वैल्यू, लाइक दिस इज आवर आरएमएस वैल्यू. तो सबसे पहले लाइक जब हम लोग आरएमएस वैल्यू कंसिडर करेंगे, वी आरएमएस, सो वी आरएमएस इज इक्वल टू वी एम बाई रूट टू, वी एम बाई रूट टू. तो जब यहाँ पे पुट करते हैं, ओके, जब यहाँ पे पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा, वी एम बाई, जब पुट करेंगे वी आर एम एस के जगह पे, तो इट विल बी लाइक वी एम स्क्वायर बाई टू आर. नाउ दिस इज पीक वैल्यू. ओके, यस, दैट इज ऑल्सो करेक्ट. डायरेक्ट एम्पलीट्यूड स्क्वायर कर दीजिए, डायरेक्ट एम्पलीट्यूड स्क्वायर कर दीजिए एंड डिवाइड बाई टू. सिंपल है, लाइक वैसे भी कर सकते हैं, वैसे भी कर सकते हैं, लाइक वहीं से मिला है आपको आरएमएस में, लाइक देयर विल बी नो डिवीजन बाय टू. बट जब उसको लाइक जो पीक वैल्यू है उसमें, जब उसमें हम लोग चेंज करेंगे, देन वी हैव टू लाइक विल गेट दिस एक्स्ट्रा टू. तो ये डिवाइड होगा बाई टू. ओके, चलिए ये समझा यहां तक. दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 3. So now the next is, we'll go for this question number 4. So okay, so सबसे पहले like जो फॉर्मूला लिस्ट फॉर व्हाट, लाइक अगर ये फॉर्मूला आप पूछ रहे थे, फॉर विच इज रिक्वायर्ड फॉर द कम्युनिकेशन टॉपिक. तो लाइक कम्युनिकेशन टॉपिक के लिए तो लाइक आई डोंट नो कि आप कौन सा फॉर्मूला पूछ रहे हैं. लाइक एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में भी बहुत सारे फॉर्मूला रहेंगे, और लाइक डिजिटल में भी अलग अलग फॉर्मूला है, वो सब अलग है. लाइक अगर ये सिंपल लाइक कॉस और ये सब साइन, ये जो बेसिक फॉर्मूला है वो पूछ रहे थे, तो वो मैं लिख सकता हूँ. बट लाइक अगर जो अलग अलग टॉपिक का फॉर्मूला आप पूछ रहे हैं, तो वो तो एक यू शुड मेक अ शॉर्ट नोट. ओके, और हर एक जितने भी टॉपिक हैं लाइक एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, उसमें कितने फॉर्मूला यूज हो सकते हैं. यू शुड आल्सो लाइक डायरेक्टली कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, और उसका जैसे मान लीजिए कि पावर ही है डीएसबी फुल कैरियर, डबल साइड बैंड फुल कैरियर का पावर कितना होता है, सप्रेस कैरियर कर दिए तो पावर कितना हो गया, वो सब उसका भी अलग अलग फॉर्मूला बनाते रहिए. ओके, चलिए, सो नेक्स्ट इज, we'll go for the question number 4. Okay, so this is also a common data type question, and the given data, first of all, we will see here कि आपका डेटा क्या दिया हुआ है. सो यहाँ पे देखिए, कंसिडर द सिस्टम shown below. यहाँ पे द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल mt has a zero mean. It is said कि जो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है
Okay, MT और मॉड्यूलेटिंग सिग्नल इज आवर मैसेज सिग्नल, उसका जीरो मीन है एंड इट्स मैक्सिमम एब्सोल्यूट वैल्यू इज लाइक AM, दैट इज ये यहाँ पे देखिए ये दिया हुआ है एंड its bandwidth is WM. WM is the bandwidth. Now, the nonlinear device has a input output relationship or like a characteristic, वो भी दिया हुआ है, the relation is this. Now, the circuit diagram or circuit is given like this, system is shown like this. What we have to find? We have to find key this filter. We have to find what is this filter, what will be this filter to get here amplitude modulated signal. Okay, what will be the filter here? What will be the filter here? So चलिए देखते हैं एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन यहाँ पे लास्ट में लाइक जनरेट करने के लिए इट इज सिंपल, लाइक इट इज अ सर्किट विच विल जनरेट आवर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल. ओके, सो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, चलिए इसको डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे. तो सबसे पहले तो यहाँ पे देख लीजिए, दिस इज आवर and this is our cos omega c t. Okay, and this is square law device. And this is a filter. यहाँ पे देखिए, here we'll get the input of this square law device is x of t. Okay, x of t. और यहाँ पे the relation is like this. Okay, see here the relation is like this. This is our yt. So the relation between yt and xt is like this. This is yt. So yt is equal to a xt plus b x square t. ओके, सबसे पहले तो यहाँ पे देखिए आपका जो भी लाइक समेशन लाइक xt क्या हो जाएगा वो देख लीजिए. xt विल बी इक्वल टू, दैट इज द रिजल्ट ऑफ दिस सम, सो इट इज इक्वल टू mt प्लस cos omega ct. ओके, इट इज mt प्लस cos omega ct. अब देखिए, so this is the given characteristic of this square law device. अब आपका yt क्या हो जाएगा देखिए, so yt will be equal to a xt is your mt plus cos omega ct plus b, and then this xt is mt plus cos omega ct square. ओके, ये दिया हुआ आपका. अब देखिए यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, दिस इज a mt प्लस a cos ओमेगा ct प्लस यहाँ पे आपको मिलेगा दिस इज b m स्क्वायर t प्लस cos स्क्वायर ओमेगा ct प्लस 2mt cos omega ct. We'll get here. ओके, ये मिलेगा. अब इसको देखिए यहाँ पे कैसे सॉल्व करेंगे. यहाँ पे देखिए
this is mt plus this is a cos omega ct plus this is p m square t plus इसको कैसे लिख सकते हैं cos स्क्वायर we know this formula ना cos 2 omega ct is equal to 2 cos स्क्वायर ओमेगा ct माइनस 1 ओके तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं आप सिंपल लाइक 1 plus cos 2 omega ct by 2 we can simply write here and this is your 2 mt cos omega ct. अब देखिए now we have to pass this signal ये yt को हमें इस तरह से पास करना है फिल्टर से कि आपको एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल मिले ओके एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल मिले तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल मिलने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो कि व्हाट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल ओके सो वी नो ना कि आपको एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है दैट विल बी लाइक देयर विल बी AC into 1 plus or some like modulating index mu cos like अगर cos के फॉर्म में नहीं लिखेंगे then there will be massive signal and then bracket के बाद there will be our cos omega ct that is the frequency carrier signal okay like carrier signal तो यहाँ पे like अगर वैसे हमें पास करना है तो सबसे पहले तो we require a band pass filter such that ये पास क्या करेगा देखिए यहाँ पे it will be like this is our fc that is the carrier frequency okay so ये हमें चाहिए and this will be fc plus omega m and this will be fc minus omega m. What is the omega m? Omega m is the frequency of massive signal. Okay, so we require a filter like this. This is our band pass filter. Okay. सो अब यहाँ पे सिग्नल देखिए और आप बताइए कि कौन कौन सा जो भी सिग्नल है उसको पास कर पाएगा ये बैंड पास फिल्टर तो देखिए एमटी इज द लाइक मैसेज सिग्नल इसका फ्रीक्वेंसी कितना है ओमेगा एम तो इसके रेंज में नहीं आ पाएगा ओके इसके रेंज में नहीं आएगा यानी कि ये पास नहीं हो पाएगा ओके ये देखिए ये पास हो जाएगा a cos omega ct okay so this is our like simple carrier signal तो ये तो पास हो जाएगा इसका फ्रीक्वेंसी कितना है fc so like it is like here only तो ये पास हो जाएगा अब देखिए इसमें ये आपका पास नहीं हो पाएगा ये जो m स्क्वायर t है ये पास नहीं हो पाएगा इस कैन यू टेल मी कि m स्क्वायर t है जो m स्क्वायर t है उसका फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा सी एम स्क्वायर टी को अगर सिंपली अगर आप फ्रीक्वेंसी डोमेन में देखेंगे तो एम टी का फ्रीक्वेंसी कितना है एम टी का फ्रीक्वेंसी ओमेगा एम है और जब एम स्क्वायर टी कर देंगे यानी कि कॉन्वोल्यूशन इन फ्रीक्वेंसी डोमेन ओके तो वहां पे आपका फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा 2wm ओके 2wm तो 2wm इज वेरी लेस देन दिस fc माइनस wm यानी कि वो इस रेंज में जाएगा ही नहीं यानी कि पास नहीं हो पाएगा यहाँ पे सिमिलरली अगर आप इस पोर्शन को देखेंगे ये भी आपका पास नहीं हो पाएगा ओके दिस हाफ के बारे में तो सोचिए मत हाफ इज लाइक दैट इज गोइंग टू बी अवॉइडेड बाय
और यस राहुल 2 FM, लेकिन ये देखिए हाफ तो आपका that will be the redundant, or like we can say कि that will be neglected or like eliminated by the capacitor in the filter. Okay, so that is the DC part. Okay, और उसके बाद से ये जो cos 2 ओमेगा CT है उसका फ्रीक्वेंसी 2FC हो जाएगा, उसका फ्रीक्वेंसी 2FC अगर F के टर्म में बात करें, यानी कि वो इस रेंज से बहुत दूर चला गया, यानी कि 2FC कहीं यहाँ पे लाई कर रहा होगा। ओके, तो ये भी पास नहीं होगा, समझ रहे हैं आपको, ये भी पास नहीं होगा। लेकिन और यहाँ पे देखिए ये पास हो जाएगा। ओके, 2MT cos ओमेगा CT पास होगा। ओके, तो पास होने के बाद जो आपको सिग्नल मिला, ओके, मतलब कि बैंड पास फिल्टर का जो आउटपुट मिला दैट इज इक्वल टू लाइक योर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल। तो इसका ये कैसा सिग्नल रहेगा, दैट इज A cos ओमेगा CT प्लस 2B MT cos ओमेगा CT। ओके, ये रहेगा, ये रहेगा ना। यहाँ पे देखिए इसको हम लोग, दिस इज आवर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल। सो यहाँ पे देखिए इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, you can take this A common here, so here we'll write 1 plus 2B by A MT cos omega CT। ओके, ये देखिए आपको सिंपल लाइक आपको दिख रहा है कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल से अगर आप कंपेयर करेंगे, ओके, अगर आप कंपेयर करेंगे तो कैन यू टेल मी व्हाट इज योर मॉड्यूलेटिंग इंडेक्स नाउ? मॉड्यूलेटिंग इंडेक्स कितना रहेगा? इट विल बी 2B by A। कितना आ जाएगा? 2B by A। सो ये था आपका, सबसे पहले तो लाइक ये सब कुछ समझा आपको। सबसे पहले इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन वो पूछ रहे थे कि किस तरह का फ्रीक्वेंसी रहेगा, किस तरह का फिल्टर रहेगा। ओके, तो यहाँ पे देखिए ये फिल्टर जो है ये लो पास फिल्टर नहीं हो सकता है, लो पास फिल्टर नहीं होगा। आइदर इट विल बी, आइदर इट विल बी एंड द मैसेज सिग्नल जो है ना उसका जो बैंडविड्थ है, मैसेज सिग्नल का जो बैंडविड्थ है वो WM है। ओके, तो यहाँ पे इट विल बी लाइक WM/2, WM/2, इट विल बी WM/2। ओके, तो यहाँ पे देखिए so it will be like a band pass filter, it will be like either band pass filter, तो band pass filter C, either it will be C or D। ओके, तो C और D में आपको पता करना है। और बैंड पास फिल्टर सेंटर फ्रीक्वेंसी FC है, सही है, एंड बैंडविड्थ W है, बैंडविड्थ भी W, बैंडविड्थ कितना रहेगा? W है, दोनों का सही है। एंड देन okay, it is like looking like exact, there will be some misprint, so आपको देखा जो फिल्टर है वो ऐसा होगा, दिस इज द फिल्टर, इसका कैरियर लाइक सेंटर फ्रीक्वेंसी FC रहेगा। ओके, एंड बैंडविड्थ कितना रहेगा इसका? बैंडविड्थ विल बी
bandwidth will be W. यहाँ पे कितना रहेगा आपका? This is FC plus W by 2 and this is FC minus W by 2. Okay. So bandwidth will be W. So we'll get a band pass filter like this. You have to decide either C or D. There will be some misprint, I think. यहाँ पे इस पोर्शन में. And also, if you go for this this next part, so यहाँ पे आपको क्या पता करना है? यहाँ पे आपको पता करना है what is the modulation index. तो modulation index हमने find किया था. Modulation index हमने find किया था. So it will be like यहाँ पे MT का जो amplitude रहेगा that is AM cos omega MT. So this is your, यहाँ पे AM भी आएगा आपका. So this is your modulation index. This is your modulation index. So कितना है? 2 B by A, 2B by A AM. So आपको कौन सा like 2B by A AM. So you'll get this. Okay. You'll get option A is the correct. चलिए समझा आपको यहां तक? ओके, देखते हैं नेट प्रॉब्लम कैसा है. 1 मिनट.
यस मैम। ये नहीं, ये शायद नेट प्रॉब्लम हो रहा है क्या मैम? ओके, सो लाइक वो शायद नेट के वजह से ही हो रहा है, मुझे लग रहा है। मैं देखता हूँ मैं। ये दूसरे नेट से कनेक्ट करूंगा तो ये सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा ना? मतलब ये मतलब फिर से सेटअप तो नहीं करना पड़ेगा ना? ओके मैम, ओके, ठीक है।
ओके, तो यहाँ पे देखिए, सो ये देखिए क्वेश्चन नंबर 5, वी हैव टू फाइंड द मॉड्यूलेशन इंडेक्स. So modulation index will be 2b by a am. ओके, इसमें कुछ डाउट है, ये कहाँ से आया, समझाइए. चलिए, कुछ डाउट है देन यू कैन आस्क. So now the next we'll go for the next question is, हाँ ये देखिए, it is same like based on the calculation which we did, okay, in the previous questions. जो हम लोग कॉन्सेप्ट प्रीवियस क्वेश्चंस में हम लोग अप्लाई कर रहे थे, सेम है, लाइक यहाँ पे भी हमें वही करना है. ओके, सो यहाँ पे देखिए, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एम. सो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले देख लीजिए, यहाँ पे गिवन डेटा आर लाइक एवरेज वैल्यू ऑफ एम टी, द मैसेज सिग्नल इज गिवन, उसका एवरेज वैल्यू इज गिवन एज 0 एंड द मैक्सिमम वैल्यू, फिर बोल सकते हैं एम्पलीट्यूड कितना है, एम है. ओके, यहाँ पे देखिए, द रिलेशन इज दिस इज द गिवन रिलेशन, और आपको क्या कैलकुलेट करना है नाउ. दिस टाइम यू हैव टू फाइंड कि what is your the value of m. You have to find the value of m when the modulation index is given as a 0.8. So जो हम लोग लास्ट क्वेश्चन में देखे थे, कैलकुलेट किए थे, जो आपका म्यू, सो म्यू इज कितना, म्यू इज 2b by a into एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का जो, सॉरी, द मैसेज सिग्नल है उसका एम्पलीट्यूड, दैट इज यहाँ पे कितना है, दैट इज m. ओके, तो यहां से आपको सिंपली वी कैन फाइंड दिस m एज अ, और यहाँ पे जो आपका a है दैट इज 4 एंड b इज 10 इफ विल कंपेयर विद द प्रीवियस क्वेश्चन. ओके, यस, ओके, देखते हैं. सो यहाँ पे m कितना आ जाएगा, म्यू इज 0.8 and then a is 4 upon this 2 and b is 10. So calculate this, कितना मिल रहा है आपको, it is 0.16. Yes, correct. So we'll go for this option D. Okay, we'll go for this option D. Now यहाँ पे देखिए, this question is important. Okay, question number 7. Question number 7 में देखिए, find क्या करना है, let W be the bandwidth of the message signal MT. Okay, and amplitude modulation signal will be recover if, यह कब हो जाएगा, देखिए इसके लिए here we can see, अगर मान लीजिए जो हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया था, हाँ यहाँ पे मान लीजिए ये मान लीजिए आपका है, दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ. ओके,
सेम है लाइक प्रीवियस प्रॉब्लम्स के जैसा ही है। तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग इसका फ्रीक्वेंसी डेट इज FM है, इसका फ्रीक्वेंसी ओमेगा सी, इसका फ्रीक्वेंसी डेट इज 2 FM, इस पोर्शन का फ्रीक्वेंसी विल बी 2 FC। ओके 2 FC, और इसका फ्रीक्वेंसी डेट विल बी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी विल बी FC प्लस FM। तो अगर हम लोग इसको ऐसे सॉल्व करें, सो दिस इज योर, अगर इसका फ्रीक्वेंसी इज ओमेगा सी, ओके दिस इज ओमेगा सी, ओके दिस इज माइनस ओमेगा सी, सॉरी, और ये जो स्क्वायर है उसका फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा, दैट इज दिस इज 2 ओमेगा सी एंड दिस इज -2 ओमेगा सी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, लाइक ये समझना है कैसे आ रहा है। और यहाँ पे जो आपका बैंडविथ, सॉरी बैंड पास फिल्टर है, बैंड पास फिल्टर है, दिस इज FC, ओके, एंड दिस इज FC plus omega and this is FC minus omega. Okay, it is given like this. उसके बाद से क्या करना है आपको, अगर आप bandwidth of message signal, so like AM will be recover if कब हो जाएगा, जब आपका FC क्या है, यहाँ पे FC किससे ज्यादा होना चाहिए, FC मान लीजिए अगर आपका ओमेगा, दिस ओमेगा इज लाइक और लाइक अगर आप इससे ये जो है इससे ज्यादा हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 2 FC, okay sorry 2 FM, it will be equal to 2 FM or like 2W, FC is greater than 2W, so we'll go for option B. We'll go for this. And now the next is, यहाँ पे देखिए, in next problem, यहाँ पे कोई डाउट है, then you can ask, like यहाँ पे दिया हुआ है, consider a periodic message signal with a period t, okay, period दिया हुआ है, that is a t shown in the figure. This message signal is applied to amplitude modulator, okay, मैसेज सिग्नल को एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में यूज करते हैं। इफ द मॉड्यूलेशन इंडेक्स ऑफ एएम सिग्नल इज, मॉड्यूलेशन इंडेक्स दिया हुआ है दैट इज म्यू ए इज इक्वल टू 0.4, व्हाट विल बी द परसेंटेज मॉड्यूलेशन इन एफिशिएंसी ऑफ द मॉड्यूलेटर, ओके, लाइक एफिशिएंसी पूछा हुआ है दैट इज नीटा, नीटा वी नो ना डायरेक्टली, इट इज म्यू ए स्क्वायर बाई 2 प्लस म्यू ए स्क्वायर, and if this is percentage then you will multiply with 100 and you will get this, okay. It's simple, you can simply use this formula and you can find this. So कितना आ जाएगा, you can calculate, we'll get here
7.4%. You get 7.4%. This question can be like fill in the blanks type question. Okay, so this is a direct question. This figure is not required for like any calculation purpose, but we can say कि सिर्फ confuse करने के लिए दिया हुआ है. Okay, इसका कुछ यूज नहीं है. चलिए, नेक्स्ट है आपका next problem. We'll go for question number 9. Okay, तो इसमें देखिए इस क्वेश्चन में क्या हो जाएगा. इट इज लाइक इट इज सेम लाइक प्रीवियस क्वेश्चन, और यहाँ पे भी आपको मैसेज सिग्नल दिया हुआ है. दिस इज द मैसेज सिग्नल एम्प्टी, और यहाँ पर पीरियोडिक signal with a period t, and the DC value of mt is 0. The DC value of mt is 0, and if the modulation index of message signal is, that is mu a is equal to 1, then you have to find the efficiency. Okay, it is also based on the formula. So neta कैसे calculate कर लेंगे? It will be like mu a square by 2 plus mu a square into 100. Okay, so कितना आ जाएगा यहाँ पे? This time mu a is equal to 1. Okay, mu a is equal to 1. So we can simply calculate and get here 33.33%. We'll get here 33.33%. Yes, it is 33.33. Now the next is, okay, यहाँ पे देखिए the question is, if we'll go for the question number 10, देखिए यहाँ पे simple है, like amplitude modulated signal दिया हुआ है. Okay, it is given like this, this is in standard form. Okay, standard form में दिया हुआ है, and it is said कि WC is the carrier frequency, and WM and 2WM are two modulating signal frequency. Okay, this signal is transmitted through an antenna. Okay, and what happened? What would be the percentage saving in the power transmitted if instead a suppressed carrier version was sent? Okay, so like ये है आपका full carrier side, full carrier, we can say full carrier double sideband. Okay, full carrier double sideband. और क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि अगर आप डबल साइडबैंड सप्रेस कैरियर भेजेंगे, तो कितना पावर आप सेव कर लेंगे. ओके, व्हाट विल बी द परसेंटेज सेविंग. देखिए कितना सिंपल है, आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डबल साइडबैंड फुल कैरियर एंड डबल साइडबैंड सप्रेस कैरियर? सिर्फ एक चीज का डिफरेंस है कि सप्रेस कैरियर में आपका कैरियर नहीं है. ओके, यानी कि जो आपका कैरियर सिग्नल का जो पावर है, उसका वो बच जाएगा, वो हमें ट्रांसमिट नहीं करना पड़ेगा. यानी कि कितना पावर बचा? कैरियर सिग्नल का पावर बच गया. ओके, कैरियर सिग्नल का पावर बच गया कि यू हैव टू फाइंड कि like
परसेंटेज पावर पूछ रहा है कि परसेंटेज पावर कितना सेव हुआ, यानी कि पावर सेव्ड मतलब कि द पावर ऑफ कैरियर सेव हुआ अपॉन टोटल पावर, दैट इज PT into 100. So this is our power saved. Okay, what will be the percentage saving in the power transmitted? Okay, so this is the saved power we can say यहाँ पे. Okay, और यहाँ पे देखिए we know ना कि टोटल पावर कितना होता है. दिस इज PT इज द टोटल पावर. सो PT का पता है हमें. दिस इज PC into 1 plus mu square by 2 into 100. ओके, सो यहाँ पे आपको कितना मिल जाएगा. सेव्ड पावर विल बी इक्वल टू, अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो विल गेट हियर, this will be cancelled, so we'll get here 2 upon 1 plus mu square into 100 into 100. So this is the percentage power save. बट इसको कैलकुलेट करने के लिए यू शुड नो कि व्हाट इज योर म्यू. सो म्यू यहां से कैलकुलेट कर लेंगे आप. म्यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा. दिस इज अंडर रूट μ1 स्क्वायर प्लस μ2 स्क्वायर. ओके, सो μ1 is 0.4 and μ2 is 0.2. ओके, तो इसको कैलकुलेट कर लीजिए आप. ओके, इसको कैलकुलेट कर लीजिए. like simply you have to find like mu square. तो mu square यानी कि μ1 स्क्वायर प्लस μ2 स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे कैलकुलेट कीजिए. इट इज 0.4 स्क्वायर प्लस 0.2 स्क्वायर, सो विल गेट कितना 0.2. विल गेट हियर 0.2. सो आपको कितना मिल जाएगा. कैलकुलेट करके बता दीजिए. डिड यू गेट यहाँ पे 2 अपॉन 1.2 करेंगे. Sorry, this will be 2 now. This is 2. This will be 2. So we'll get like 2 upon 2.2 to 100 कर देंगे. So we'll get like 90.9%. So this is the power saved. Okay, this will be the power saved. नहीं, कुछ कैलकुलेशन में गलत है. सिमरनजीत तो इज सेइंग इट इज 167.56. नहीं, राहुल प्रभु मे बी ही इज सेइंग कि म्यू कितना है. ओके, yes, approximately we can say 91. Okay, 91%. Okay, that is the correct. चलिए नेक्स्ट है आपका. Now I'll go for the next problem. ओके, सो यहाँ पे देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम में देखिए. दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, अब हम लोग लाइक वी आर एंटरिंग इन एंगल मॉड्यूलेशन वी कैन से. यहाँ पे हम लोग जनरली विल सी फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन एंड फेज मॉड्यूलेशन देखेंगे. तो यहाँ पे देखिए एंगल मॉड्यूलेशन, एंगल मॉड्यूलेटेड सिग्नल इज गिवन लाइक दिस. दिस इज द एंगल मॉड्यूलेटेड सिग्नल. Okay, and the frequency signal is given is 10 megahertz. The frequency of carrier signal is a 10 megahertz given. Okay, what we have to find, यहाँ पे in this question they are asking what is the peak phase deviation we have to calculate.
Okay, you have to calculate peak deviation, peak phase deviation. So देखिए, the important thing is like यहाँ पे this is your angle modulated signal. We don't know angle modulated signal can be either phase modulated or like frequency modulated. So ये बताया नहीं है इन्होंने कि आपका कौन सा है, लाइक फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड सिग्नल है या फिर फेज मॉड्यूलेटेड सिग्नल है. सो क्या करना है आपको, यहाँ पे जो एक्सटी दिया है उसका जो ये पोर्शन है यहाँ पे देखिए. ओके, ये इसको फॉर्म मॉड्यूलेटेड सिग्नल लिखेंगे तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, दैट इज AC cos 2 pi FCT प्लस t. ओके, ऐसे लिख सकते हैं. तो यहाँ पे जो है दिस इज द फेज ना. तो अब आपको कैलकुलेट क्या करना है, पीक फेज डेविएशन. ओके, मतलब कि फेज डेविएशन कितना है, दिस इज द फेज डेविएशन. सबसे पहले तो लाइक फेज डेविएशन कितना है, 4 sin 2000 pi t. दिस इज द फेज डेविएशन. दिख रहा है आपको, दिस इज द फेज डेविएशन. अब आपको पीक फेज डेविएशन फाइंड करना है. पीक फेज डेविएशन मतलब कि जो भी आपका ये जो फेज डेविएशन है, ये इसका मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करना है. ओके, इसका मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करना है. सो ये कितना आ जाएगा, इसका ये कितना हो जाएगा, इट्स लाइक एम्पलीट्यूड इज 4 ना. सो we'll get here 4, that is B. Okay, we'll go for this B option. We'll get this B. समझा ये समझा. चलिए, now we'll go for this peak frequency deviation. Okay, ओके, तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, पीक फ्रीक्वेंसी डेविएशन के लिए देखिए, so like we will follow this method. This is like important method. कैसे करेंगे कैलकुलेट. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव अ रिलेशन लाइक दिस. अगर इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करना है तो वी हैव दिस फॉर्मूला, Fi is equal to 1 by 2 pi t by dt this is theta it. ओके, और जो भी आपका सिग्नल दिया हुआ है, जो भी सिग्नल दिया हुआ है आपका, यहाँ पे इसको हम लोग कंसिडर करेंगे. दिस इज थीटा it. ओके, दिस इज आवर थीटा it. तो कितना हो जाएगा, आवर इंस्टेंटेनियस Fi will be 1 by 2 pi, this is d by dt, and theta it कितना हो जाएगा, it will be 2 pi fct plus 4 sin 2000 pi t. Okay, so Rahul is sending us a 8000 pi as a peak frequency deviation. You should also verify. Okay, अगर आपको कुछ आंसर मिला then you can also send. We'll also verify, we'll also check this.
इसको देखिए कैसे करेंगे कैलकुलेट। सो यहाँ पे देखिए सिंपल है, लाइक यहाँ पे अगर आप डिफरेंशिएट करेंगे सो विल गेट हियर 2 पाई एफ सी टी प्लस इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे विल गेट हियर 8000 पाई, दिस विल बी cos 2000 पाई टी। ओके, इट विल बी लाइक दिस, ये ऐसा हो जाएगा। देन इसको सॉल्व करेंगे विल गेट हियर एफ सी, सॉरी दिस विल बी हियर, देयर विल बी नो टी, देयर विल बी नो टी। यहाँ पे देखिए दिस इज एफ सी, अगर इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पे मिलेगा आपको कितना 4000 cos 2000 पाई टी। ओके, तो यहाँ पे आपको अब मिल जाएगा, वी आर कैलकुलेटिंग फॉर एफ आई ना, तो अब एफ आई माइनस एफ सी कितना हो जाएगा, दिस इज आवर फ्रीक्वेंसी डेविएशन विच इज इक्वल टू 4000 cos 2000 पाई टी। ओके, एंड when we'll go for the maximum peak peak frequency deviation, मतलब कि ये जो दिया हुआ है सिग्नल, ये जो आपको मिला इसका मैक्सिमम चाहिए। ओके, इसका मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, यानी कि दिस विल बी 4000। ओके, दिस विल बी 4000। सो क्या मिलेगा आपको, पीक फ्रीक्वेंसी डेविएशन कितना मिलेगा, विल गेट दिस 4000। Okay, so we'll go for this B option. Okay, चलिए कुछ भी डाउट है देन यू कैन आस्क। So now we'll go for the next problem. ये सॉल्व हो गया, यहाँ तक सबको समझा। Now I'll go for this. Okay. So the message signal is given as this. This is the message signal, and in this 13 the problem here, it is asked like, agar MT is the message signal, is MT is the frequency modulated on a carrier with a frequency of 10 raised to 6 hertz. Okay, ये देखिए यहाँ पे FC दिया हुआ है, FC is your 10 raised to 6 hertz. Okay, यानी कि we can say 1 megahertz with a frequency deviation constant KF is equal to this 0.5 megahertz per volt. Okay, the maximum instantaneous frequency of modulated signal. Okay, you have to find the maximum instantaneous frequency of the modulated signal is. Okay, ये देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे, you should know the formula here, you should know this relation, आपको पता है। okay, आपको पता है कि the instantaneous frequency Fi is equal to Fc plus Kf mt. okay, ये होता है, this is the given expression, like this is the formula or this is the required expression here. okay, तो Fi जब maximum calculate करेंगे, so here we'll get like Fc is the given data and this Kf is also given, and जो mt है इसका भी maximum value चाहिए आपको। okay, जो आपका mt है उसका maximum value चाहिए। यहाँ पे देखिए we have this Fc, that is frequency as a 10 raised to 6 hertz, मतलब कि we can say here 1 megahertz plus Kf is also given as a 0.5 megahertz per volt,
into this empty का maximum value. Empty का maximum कितना है? And this is the empty, this is the given empty. Empty का maximum value is 1. So we have to simply multiply with this 1, or here again we will get this megahertz. So आपको Fi का maximum value कितना मिल गया? That is 1.5 megahertz will get. So here we'll go for the option B. Okay, we'll go for this option B. Okay, समझा ये? Now the next is if MT is phase modulated with the phase deviation constant Kp, the maximum instantaneous frequency we have to find. Okay, if MT is phase modulated with the phase deviation constant Kp, okay, the maximum instantaneous frequency we have to find here. Chaliye, now we'll go for this question number 14. So यहाँ पे देखिए first of all, like it is said now, कि MT is phase modulated with the phase deviation constant Kp. Okay, तो अब यहाँ पे देखिए the given data like MT is the phase modulated with the phase deviation constant Kp is equal to 3 radian per volt, and you have to find the maximum instantaneous frequency you have to find. Okay, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा कि यू हैव टू राइट द फेज मॉड्यूलेटेड सिग्नल. Okay, phase modulated signal. So phase modulated signal is our like this. It is AC cos 2 pi FCT plus KPMT. It is like this. Okay. So this is our, we have to calculate KP is given, FC is also given. Okay. यहाँ पे देखिए, so KP is given as a 3 radian per volt. Okay, and FC is also given. FC is given as a 10 raised to 6 hertz. So you have to find instantaneous frequency. मतलब कि यहाँ पे this is your consider as a theta IT. कैसे करेंगे कैलकुलेट? देखिए इसको assume कर लीजिए that is the theta IT. Okay, and we have this formula for the instantaneous frequency. It is 1 by 2 pi d by dt. This is a theta IT. Okay, so यहाँ पे देखिए get here 1 by 2 pi. This is a d by dt, and this theta IT is your 2 pi FCT plus KPMT. It is like this. So जब इसको सॉल्व करेंगे we'll get here 1 by 2 pi. So सॉल्व करेंगे we'll get here, if we differentiate we'll get here 2 pi FC plus यहाँ पे differentiate करेंगे we'll get like
You'll get like this. तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा FC प्लस KP by 2 pi and this D by dt mt. This is your Fi. ये अब लाइक आपको पता है कि आपका mt कितना है. दिस इज योर द गिवन mt. This is 1, this is 3, this is 4. Okay, and यहाँ पे the amplitude is 1. Okay, amplitude is 1. So what is the slope? Slope यहाँ पे slope कितना है? यहाँ पे slope 1 है और यहाँ पे भी slope -1 है. Okay, so this is your mt. Okay, तो जब आप d by dt mt करेंगे, so you'll get like this. यहाँ पे ऐसे मिलेगा for this 1 and then from at 3 we'll get here like this. तो ये भी 1 है और ये आपका -1 है. So you'll get a signal like this जब आप d by dt करेंगे तो लाइक अगर आपको Fi का मैक्सिमम वैल्यू चाहिए then Fc is 10 raised to 6 plus Kp is like a 3 by 2 pi. Kp is 3 ना, Kp is 3 by 2 pi and इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना हो जाएगा? इसका मैक्सिमम वैल्यू विल बी 1 क्योंकि यहाँ पे देखिए मैक्सिमम वैल्यू इज 1. Okay, so we'll get like this. Okay, so we'll get our instantaneous maximum instantaneous frequency as a 10 raised to 6 plus 3 by 2 pi. Okay, ये समझा आपको? So ये है आपका question number 14 and here we'll go for the option B. We'll go for option B. Now the next is यहाँ पे देखिए the signal is given as this. We'll go for 15. The given data is a modulated signal, frequency modulated signal. So this is our FM, like frequency modulated signal is given like this. The carrier frequency and maximum frequency deviation of the signal are respectively you have to find. मतलब कि आपको क्या करना है और सिंपल है. You have to find FC find करना है. FC is equal to what? And your instantaneous like maximum frequency deviation, that is del F max find करना है, maximum frequency deviation. So you have to follow the same procedure and you have to find. Okay, so we know ना कि कैसे करना है. You have to simply consider this as a angle theta I. Okay, angle theta, and then you have to differentiate and divide by this 2 pi and we'll get the instantaneous frequency, and simply we'll divide our frequency, carrier frequency from the instantaneous frequency and we'll get the frequency deviation. Okay, so इसको भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं. सबसे पहले तो यहाँ से लाइक सिंपल है. We can write this as it is given like this: 10 sine 2 pi into 10 raised to 8t plus 5 sine 400 pi t. It is given like this. So here if we'll compare na directly, we'll get our FC is equal to kitna 10 raised to 8 hertz. So we can write this as a
100 megahertz we can write, and we can calculate our Fi as 1 by 2 pi d by dt. Actually this is the procedure. अगर आप इसको follow करेंगे then there will be no confusion. Okay, so यहाँ पे this will be 2 pi into 10 raised to 8t plus 5 sine 400 pi t. So we'll get here 2 pi into 10 raised to 8 plus this is 2000 pi cos 400 pi t. Okay, so यहाँ पे आपको मिल जाएगा fc plus this is 1000 cos 400 sorry 400 pi t. So this is our Fi. So now Fi minus Fc is equal to your frequency deviation del F, okay, which is equal to 1000 cos 400 pi t. Okay, we'll get this. And यहाँ से देखिए आपको मिल जाएगा, लाइक अगर आपको मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी डेविएशन फाइंड करना है देन विल गेट दिस 1000. Okay, 1000. So we can also write this as a 1 kilohertz. Okay, so we'll go for ये मिल गया आपको. So we'll go for option B. Okay, we'll go for option B क्योंकि आपका कैरियर फ्रीक्वेंसी 100 मेगाहर्ट्ज है एंड द फ्रीक्वेंसी डेविएशन इज 1 किलोहर्ट्ज. ओके, ये हो गया आपका. Okay, if you have any doubt then you can ask. यहाँ तक का कुछ डाउट है then you can ask. चलिए नेक्स्ट है आपका लाइक सिमिलर प्रॉब्लम बट थोड़ा यहाँ पे जो आपका मैसेज है लाइक दिस इज मल्टीटोन. ओके, यहाँ पे दो फ्रीक्वेंसी, लाइक फ्रीक्वेंसी एक है बट इट इज लाइक this is this portion, this type of portion will be there. So तो उस केस में क्या करेंगे देखिए. ओके, तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, लाइक यू हैव टू फाइंड कि आपका मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी एंड फेज डेविएशन क्या हो जाएगा. ओके, तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे. हाँ, यहाँ पे जो आपका एस टी है that is s of t that is equal to cos 2 pi plus t 150t plus 40 cos 150t. Okay, so this is the angle modulated signal. Okay, this is the angle modulated signal and you have to calculate frequency deviation and phase deviation. Okay, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं. This can be written as cos यहाँ पे cos 4 pi into 10 raised to 60 plus
This will be like 60 pi sine 1 pi t plus 80 pi cos 1 tt. ये हो गया आपका. और यहाँ पे this is the angle which is our theta I, we can consider as a theta it. So fi जो आपका इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी है that will be 1/2 pi d by dt theta it. We have this formula. So यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, और this is the theta I, so this will be 4 pi into 10 raised to 60 plus 60 pi sin 150 t plus 80 pi cos 150 t, like this. Okay, so theta I of 4 pi into 10 raised to 60, sorry, there will be no t, or into this. इसको अगर आप करेंगे तो मिलेगा कितना, we'll get here 9000 pi cos 150 t minus this 12,000 pi sin 150 t, like this. और जब इसको सॉल्व करेंगे we'll get here 2 into 10 raised to 6 plus this will be 4500 cos 150 t minus 6000 sin 150 t, like this. Okay, ये आपका fi. Okay, and that is going to be your fc. So fi minus fc will get like this. So this is the phase, like frequency deviation. This is the frequency deviation. और यहाँ पे इसका मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करना है. ओके, तो कैसे फाइंड करेंगे, देखिए, we'll get like this. ये ऐसे फाइंड करेंगे इसका मैक्सिमम वैल्यू. ओके, तो कितना मिल जाएगा आपको, we'll get this as 7.5 kilohertz. We'll get, actually if we'll calculate we'll get 7500 hertz. So in kilohertz we'll get 7.5 kilohertz. Okay, we'll get this is a frequency model, sorry, frequency deviation, peak frequency deviation. Now the next is यहाँ पे देखिए, अब आपको क्या कैलकुलेट करना है, यू हैव टू फाइंड कि आपका फेज डेविएशन कितना हो जाएगा. ओके, यू हैव टू फाइंड फेज डेविएशन. फेज डेविएशन, ओके, फेज डेविएशन लाइक सिंपल है. यहाँ पे जो गिवन सिग्नल है, ओके, गिवन सिग्नल है, वो बता दें मैं आपको, ये दिस इज द फेज. ओके, दिस इज द गिवन फेज डेविएशन. ओके, दिस इज द गिवन फेज डेविएशन. इसको छोड़ के, सॉरी, यहाँ पे 2 पाई भी ऐड हो जाएगा, 2 पाई भी मतलब इंक्लूड हो जाएगा, इट विल मल्टीप्लाई लाइक 2 पाई. ओके, मतलब कि आप लिख सकते हैं
Okay. Uh, so it will be like this. Phase deviation will be like this. 60 pi sine 150t plus 80 pi cos 150t. This is the phase deviation. Okay. Or like we can say phase in the given angle modulated signal. Okay. So like peak, if you have to find like peak phase deviation, so like you have to find the magnitude of this or like maximum value. So this will be 60 pi square plus 80 pi square. Okay. So कितना हो जाएगा इसको जब आप सॉल्व करेंगे विल गेट हियर 100 pi in radian. 100 pi. Okay, so this is our peak phase deviation. So this is the method to calculate like frequency deviation and phase deviation. Now the next problem is this is question number 16. So इसमें आपको क्या मिला आपको? So we'll go for this option D. Okay, we'll go for this option D. Now the next is so the next will be see here. We'll go for question number 17. Okay. So this is also a common data type question. Okay. So these are related questions. So यहाँ पे देखिए और transmitter uses a carrier frequency of 1 kilohertz. So this is the given data. जो आपका carrier frequency है 1 kilohertz है. Okay, if the transmitter output is given like this, it is given like this. Okay, then what you have to find? You have to find phase and frequency deviation. Okay, this is also like similar problem, like simply here some difference is like this. This is the difference. यहाँ पे some sinusoidal signal के जगह पे there is some like a square signal, we can say, or algebraic signal, quadratic function, we can say. So यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं. First of all, we'll go for like phase and frequency deviation. So like first here we'll go for phase deviation. So phase deviation में क्या हो जाएगा? We'll get here. So this is your phase. This is the phase. Okay, this is the phase. So what is your phase deviation? Phase deviation is your 20 t square. This will be your phase deviation. Okay, it is simple. Like it is simple. यहाँ पे आपको phase दिख रहा है. So यहाँ से आपको phase deviation simply मिल जाएगा. You can calculate, and this is equal to 20 t square. Okay. Now the main thing is you have to calculate frequency deviation. Okay, frequency deviation पता करना है आपको. तो frequency deviation के लिए we'll follow the same procedure. Okay, we'll follow the same procedure. और
we have this as a, we'll consider this as a theta I or like theta IT. This is theta IT. So यहाँ पे आपको क्या मिलेगा? This as a so we have x of t as a, यहाँ पे देख लीजिए, x of t is equal to this cos 2 pi into 100, sorry, 1000 t plus 20 t square. Okay, so this is your x of t. Okay. अब इसको यहाँ पे आपको मिल जाएगा, दिस इज थीटा आई टी. सो एफ आई कैसे मिलेगा? दिस इज 1/2 पाई, ओके, डी बाई डी टी थीटा आई टी. ये ऐसे यहां से you can say here this is 1/2 pi. This is simple like 2 pi into 1000 t प्लस 20t स्क्वायर. सो इसको अगर आप मल्टी से पहले डिफरेंशिएट कर लेंगे, सो विल गेट लाइक दिस. दिस इज एज 2 pi into this 1000 plus 40t. सो यहाँ 1000 plus 20 by pi t. Okay, and this is your fi and this is your fc. So like fi minus fc is equal to your frequency deviation. Okay, frequency deviation which is equal to 20t by pi. Okay, 20t by pi. So this is our frequency deviation. So 20t by pi and 20t square. Okay, so I'll go for option C. ओके, ऑप्शन सी. सो ऑप्शन सी में देखिए फेज डेविएशन आपका 20t स्क्वायर एंड फ्रीक्वेंसी डेविएशन कितना है? 20t बाई पाई. यस, yes, it is simple. Like Simran is saying, it is 20 by pi t. Okay, that is good. Now you have to we'll go for this question number 18. क्वेश्चन नंबर 18. यहाँ पे देखिए, if the transmitter output is given by this, the transmitter output is given by this, then you have to find phase and frequency deviation. Phase and frequency deviation. Can you calculate this and tell me? Can you calculate this? Okay, so it is very simple. Okay, it is very simple. Can you tell me, first of all, can you tell me what is your, like, simply आप देख के बता सकते हैं what is your phase deviation. तो सबसे पहले write phase deviation. Okay, write in chat box what is the phase deviation. कितना phase deviation हो जाएगा? Can you tell me? Phase deviation कितना होगा? Yes, tell me what is the phase deviation. Then we'll go for frequency deviation also. मिला क्या किसी को भी? Anybody?
देखिए सिंपल है लाइक see the question is like this is cos, this is not cons, there is some misprint, this is cos only. Okay, क्वेश्चन में देखिए तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग? कैन वी राइट दिस एज अ is question number 18. Okay, can we write this as cos 2 pi into 1000 t plus 2 pi into 100 t. ऐसा लिख सकते हैं क्या? ऐसा लिख सकते हैं क्योंकि 2 पाई इंटू 1100 है दिया हुआ है, देखिए वहां पे. ओके, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं. नाउ इट इज सिंपल ना. अब तो आपका सिंपल हो गया. दिस इज गोइंग टू गिव यू फेज डेविएशन, दिस इज गोइंग टू गिव यू फेज डेविएशन. तो कितना हो जाएगा आपका फेज डेविएशन? दिस विल बी 200 pi t. This will be 200 pi t. So this is your phase deviation. Phase deviation is equal to 200 pi t. समझा ये? Then we'll go for frequency deviation. And your frequency deviation will be, अगर आप कैलकुलेट करेंगे विल गेट 100, क्योंकि आपके पास कितना बचा यहाँ पे? विल गेट लाइक दिस ना, cos 2 pi into 1000 t plus 2 pi into 100 t ऐसे. And this is your theta t. So fi is equal to 1 by 2 pi d by dt theta t. So जब इसको सॉल्व करेंगे we'll get here 1 by 2 pi. सॉल्व करेंगे we'll get here 2 pi into 1000 plus 2 pi into 100. So we'll get here 1000 plus 100. So this is your fi. So sorry, fc. So fi minus fc is equal to del f, that is frequency deviation, which is equal to 100 hertz. So this is your frequency deviation. This is your frequency deviation. ओके, कैलकुलेट हो गया दोनों. चलिए नेक्स्ट है
Okay. So now we'll go for this question number 19 and 20. Okay. So यहाँ पे आपको for this question number 18 कितना मिला कौन सा? Go for option B. Sorry. Yes. Option B. चलिए इसको सॉल्व कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 19 and 20. Okay. And tell me the answer of this 19 and 20. Here we'll take a short break of like 10 minutes. उसके बाद से फिर से हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट प्रॉब्लम्स.
Okay, so now we'll go for question number 19 and 20. सॉल्व हुआ क्या आप लोग से? You can send your answer. कितना मिला आपको? तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले so we have this this is FM modulator. Okay, uh, this is the frequency modulated signal, and we have the like this this coefficient, frequency coefficient is given as a kf as a 30 hertz per volt, and mt is the rectangular pulse like this. This is the rectangular pulse, this is the mt, that is that's the signal. And first of all we have to find what is the peak frequency deviation. Okay, so कैसे करेंगे सॉल्व? देखिए यहाँ पे हमें सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए वी हैव टू ड्रॉ आवर मैसेज सिग्नल एमटी. ओके, तो उसको ड्रॉ कर लेंगे. देखिए क्या हो जाएगा. So this is our rectangular, like this is our rectangular pulse like this. So here the amplitude is 8 and like the duration is 1. So it is from like half to plus half, minus half to plus half. Okay, it is given like this. अब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 8 rectangular t by 4 minus half. Can we write like this? Okay. सो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे हम लोग? सबसे पहले लाइक दिस इज शिफ्टिंग एंड स्केलिंग. तो क्या करेंगे, इसको हम लोग शिफ्ट कर देंगे. सो शिफ्ट करेंगे सो विल गेट अ सिग्नल लाइक दिस. So here amplitude is 8 and it will be shift towards right by this half, so to 0 to 1. Okay. Okay, if we'll scale, so we'll get our message signal m at this. It is from 0 to 4. Okay, and amplitude is 8. So this is our message signal mt. समझा? ये आपको समझा? Now we'll follow the same procedure and yes, we'll check here. यहाँ पे देखिए फ्रीक्वेंसी डेविएशन के लिए क्या करना पड़ेगा. You have to simple the given signal is like this. S of t is equal to 100 cos omega ct plus 2 pi kf integration from 0 to 1 m tau d tau. Okay, so that is the mt.
Okay, that is the empty. We can simply say 0 to 4 and this is 8. Okay, this is our empty और like m tau. So अगर इसको हम लोग इंटीग्रेट कर दें सिग्नल को फ्रॉम 0 to 1, 0 to 1, so कितना है m tau will is 8 and this is a d tau, so it will be like the value will be 8 you will get here. Okay, ये मिला. यहाँ पे और लाइक सिंपल इसको थीटा आई टी पहले मान लीजिए. Sorry, this is 8t, or like this is 8, and when we'll put the limit we'll get 8. बट इसको अगर हम लोग ऐसे सॉल्व करें दिस एफ आई इज इक्वल टू 1/2 पाई. ओके, एंड d by dt and this is 2 pi fct plus 2 pi kf and यहाँ पे this is integration from 0 to 1 m tau d tau. So यहाँ पे it will be like 1/2 pi, this is 2 pi fc plus this is 2 pi kf, and when we'll integrate and differentiate both, so it will be simply you can say like cancel each other and we'll simply get this empty. Okay, तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा? You'll get here fc plus kf empty, और यहाँ पे जब आपको फ्रीक्वेंसी डेविएशन चाहिए, सो लाइक kf empty का यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू, सो empty is 8. empty is the maximum value of empty, their amplitude is 8 now, so you'll get here 8 and kf is given as a 30 into 8, so we'll get like 240. Okay, we'll get 240. Okay, yes, we got one answer is 240 hertz, that is correct. Okay, now the next is we have to simply put like simply find the phase deviation. Phase deviation. So this will give us the phase deviation. यहाँ से मिल जाएगा आपको. We'll get from here. So it will be simple like अगर इसको आप solve करेंगे we'll get here 2, sorry, it is 2 pi kf and इसको solve करेंगे we'll get here 8 here. So here we'll get 2 pi into this
30 into 8, so कितना मिल जाएगा आपको? This is the your phase deviation. Okay, this is the phase deviation. You can calculate this, and you have to calculate this phase deviation in a radian. Okay, so for this radian, you have to divide with this 2 pi. So simply we'll get our phase deviation is also the 240, but here the unit is radian. Okay, so ये हो गया आपका question number 19 and 20. Now the next is, ये समझा आपको? Yes, Simran is saying 485. Yes. Uh, so like in radian, you have to divide it by this 2 pi. So you'll get 240 in radian. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए यहाँ पे binary channel with the capacity is given as a 3 capacity is given as a 36 kbps is available for PCM. Now we are entering in PCM. Okay, you can say in digital communication also. So PCM voice transmission, if the signal is band limited to 3.2 kilohertz, okay, signal is band limited to 3.2 kilohertz, then appropriate value of quantization level. Okay, you have to find the quantization level and sampling frequency. Okay, these are the data you have to find. तो सबसे पहले तो आप नोट कर लीजिए the datas are तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे. So given data are like we have capacity is given as a this capacity is equal to 36 kbps. Okay, and the massive signal frequency. Okay, the massive signal the signal is band limited to this like massive signal frequency is given as a 3.2 kilohertz. Okay, and you have to find what is the quantization level. You have to find quantization level, that is L कितना है. So and sampling frequency पता करना है. Sampling frequency you have to find. Okay, so see how we'll find.
sampling frequency, we know the formula for the sampling frequency. So sampling frequency Fs is equal to 2fm. 2fm. So it is like 2 into 3.2. So this is 6.4. Okay, it is 6.4 kilohertz. Okay, and we know कि आपका we also have this formula for the bandwidth. Bandwidth is equal to RB by 2. Okay, RB by 2. So this is this RB, and we also know this formula RB is equal to NFS. This is the formula for bandwidth of PCM. And we have this formula. RB is our bit rate. Okay, RB is our bit rate, which is represented as the capacity in this. So RB is our 36. N you have to find, and Fs we have calculated the 6.4. So N is equal to 36 by 6.4. So we'll get like 5. We can, if we'll calculate, we'll get 5.625. Okay. So this will be this can be considered as a 5 bit. This will be considered as a 5 bit. So now you can calculate the quantization level with this formula. L is equal to 2 raised to n. So 2 raised to 5. So we'll get this is 32. We'll get 32. So the quantization level will be 32. Okay, so in this way we can calculate this. So यहाँ पे आपको क्या क्या मिल गया? Quantization level कितना मिला? 32, and the sampling frequencies we got as a 6.2. So like we can also say here, यहाँ पे ऑप्शन में 6.4 नहीं है, तो हम लोग like ऐसे प्रोसीड करेंगे कि this quantization, this sampling frequency should be greater than or 2 FM, greater than or equal to 2 FM. So like यहाँ पे आपको इसको सॉल्व किया 6.4 मिला, so greater than 6.4 चलेगा, यानी कि this 7.2 चलेगा and this 32. So we'll go for this option D. Yes, Amit is saying FS is not in the option. No, it is like if we'll follow this rule, we can say कि FS कितना होना चाहिए? FS sampling frequency should be greater than or equal to 2 FM. So from there we can find now 7.2. Now the next is okay. चलिए यहाँ तक समझा आपको. Now we'll go for the next and now I'll go for this question number 22. So here, first of all, we'll go for the data given.
So यहाँ पे देख लीजिए the delta modulation. We are going to discuss about the delta modulation system. Okay, and analog message signal limited to a bandwidth of analog message signal limited to a bandwidth of 3.5 kilohertz. A sinusoidal test signal of amplitude. This this is the test signal whose amplitude is 1 volt and frequency as a 800 hertz is applied. You have to find the sampling rate of the system is this. This is the sampling rate of the system. Now what you have to find, the minimum value of step size. The minimum value of step size to avoid slope overload. So like there are two error in delta modulation, that is slope overload error and granular error. Okay. So सबसे पहले तो like you have to find कि what is the condition to occur our slope overload error. Okay. So the condition is this: d by dt empty is greater than this. Okay, if the slope of message signal, we can say, is greater than the slope of the delta modulated signal, or like the constructed signal, then there will be chance of occurring. There will be like there will be slope overload error. Okay, तो इसको या इससे यहाँ ये भी मिलेगा हमें. This expression will also work from this. This L and this is greater than this del upon Ts. Okay. Also, we can say here this. What is this del? This is del obtained. So this is okay. We'll proceed like this. Okay. So यहाँ पे देखिए this d by dt empty. This is greater than. This should be greater than this. और ये आपको this is equal to d by dt empty. So this is like if empty will consider as a am cos 2 pi fmt, अगर ऐसा दिया हुआ है, okay, we'll consider this as a like this. So आपको कैसा मिलेगा? Del obtained will be am into 2 pi fm. We'll get this. Here we require the maximum. Okay, so we'll get this. So यहाँ पे आपको मिल जाएगा. This is okay. So यहाँ से आपको मिल जाएगा this del should be greater than this 2 pi fm into am into this ts. So this should be greater than this 2 pi fm am into 1 by fs. Okay, so this should be greater than this 2 pi fm is given as a 800, am is given as a 1,
and 1 by this fs, that is sampling frequency. This is given as a 64000. Okay, this is the sampling frequency. See here, 64 kilohertz. So it will be like this. So here we'll get this. Okay. So यहाँ पे मिलेगा आपको like in volt we'll get. So like for getting in millivolt we'll multiply here 1000. Okay, so it will get in millivolt. So if we'll calculate, we'll get here this should be greater than 78.5 millivolt. 78.5 millivolt. We'll get this. So in this question, so we'll go for this option D. What you have to find? We have to find the minimum value of a step size to avoid. So like this should be greater than this value. Okay, and the minimum will be 78.5. So we will go for this. Okay. Now the next is you have to calculate the granular error. Okay, you have to calculate the granular error. Okay. Granular error. So it will be granular error power you have to calculate. So the formula will be like this. Power is equal to del OPT square by 12. As in PCM, the power is del square by 12. Okay, so from there only we'll get this. Okay, so यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है जो हमारा वहां पे जो del is equal to like यहाँ पे am by 2 raised to n हो जाता था. Okay, so यहाँ पे sorry this del is equal to वहां पे क्या हो जाता था, this is am by l. तो l is equal to your 2 raised to n. So यहाँ पे in dm the n is 1 only. Okay, तो यहाँ पे we'll get 2 raised to 1 यानी कि 2 only l. So यहाँ पे we'll get if we'll put like amplitude as a del opt only by this 2 whole square by this 12. So it will be like del opt square by 12 into 4. Okay,
Okay, so from this formula we can calculate, okay, our power. So we have already calculated this. So it will be 0.0785 square by 12 into 4. इसको कैलकुलेट कीजिए कितना आएगा. Okay, so this will be 0.0785 square divided by 48. So like we will get this as 1.28 into 10 raised to minus 4 watt. We'll get this. Okay, so we'll get our power, granular power as a 1.28 into 10 raised to minus 4. Okay, so we'll proceed like this. Chaliye, next is, so from here only we can calculate our granular error power or like noise power. And here we got this as a 1.28 which is like approximately equal to this 1.12. So we'll go for option D. We'll go for option D. Okay, we'll go for this option. Okay, so now the next is, we'll go for the next problem, that is 24 related to this. So you have to find the signal noise ratio. Okay, signal noise ratio. So सबसे पहले सिग्नल का जो भी पावर है और सिग्नल का जो भी लाइक सिग्नल इज लाइक सिग्नल का एम्पलीट्यूड इज लाइक एम. सो सिग्नल का पावर कितना हो जाएगा. सिग्नल पावर इज योर 1/2. ओके, 1/2 watt. Okay, and the noise power we have calculated, and it is like this. This is 1.12 into 10 raised to minus 4 watt. Okay, so like signal to noise ratio. So it will be 1 upon 2 into 1.12 into 10 raised to minus 4. Okay, yeah. So ये कितना आ जाएगा? If we'll calculate this, we'll get 4.46 into 10 raised to 3. Okay, we'll get this. We'll get this. So we'll go for option C in this case.
चलिए ये हो गया आपका. Now I'll go for the next problem. It is question number 25. Now I'll go for question number 25. So यहाँ पे देखिए, the question is, it is like this. The given data is a sinusoidal signal is sampled at 8 kilohertz. Okay, so this is our sampling frequency, you can say. Okay, sampling frequency is given as this, and it is quantized using 8. But sorry, this is misprint. This is bit. This is bit. Okay, so it is quantized using 8-bit uniform quantizer. Okay, that is saying like this. What you have to find, if signal to noise ratio to be quantization signal to noise ratio. Sorry, if this, like, it is saying like this, and R be the bit rate of the PCM, R be the bit rate. So what will be the correct like value you have to find? So this is like direct. If you know the formula direct now, half. So Karma is asking half कैसे आया? Okay. So ये मुझे लग रहा है कि ये पूछ रहे हैं सिग्नल का पावर कैसे आया. सिग्नल पावर, दिस इज द लाइक सिग्नल का एम्पलीट्यूड इज AM is equal to 1 volt. Okay, so the power अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे, so power is what? AM square by 2 ना. Power is AM square by 2. So from here AM is 1, so it is 1 by 2. It is 1 by 2. यहाँ से आया हाफ. ये समझ गया होगा आपको. Now we'll go for this question. और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डायरेक्ट लाइक आपका जो गिवन डेटा है, it is simple sampling frequency is 8 kilohertz, and quantization bit, that is n is equal to number of bit is equal to 8, and the bit rate you have to directly find with this formula. R is equal to NFS. R is equal to NFS. So यहाँ से आपको मिल जाएगा NFS. N is given and FS is given, so we'll get like 64 kbps. We'll get R मिल गया, and then we'll go for this signal to noise ratio. In like signal to noise ratio, so like in option we can see here कि आपका dB में है. So we know this formula also. Okay, this is very important formula. 1.8 plus 6n. Okay, तो यहाँ से भी, and this will give us in dB. Okay, तो जब dB में directly calculate करना है, so we can use this formula. Okay, we can use this formula. So यहाँ से आपको कितना मिल जाएगा? We'll get here this n is 8, so we'll get simply here 49.8 dB we'll get here. Okay. So next is next problem we'll go for is this. We'll go for question number 26, 27, 28. Okay, so this is also related common data problem. यहाँ पे देखिए,
The given data is like this. A single performance is to be recorded by sampling and storing the sample values. Assume that the highest frequency tone to be recorded is 15800. It is 15,800. Okay. So यहाँ से आपको क्या मिल रहा है? Like this given data is like message signal का maximum value. Okay, FM max, and this is one like 15. We can say here. 15 or like 1.58 into 10 raised to 4 hertz. You can see. ओके ऐसा कर सकते हैं हम लोग. ये हो गया आपको मैसेज सिग्नल का फ्रीक्वेंसी. अब आपको फाइंड क्या करना है इन क्वेश्चन नंबर 26. यू हैव टू फाइंड minimum sampling frequency. Okay, minimum sampling frequency you have to find. Sampling frequency you have to find means we have this relation fs should be greater than or equal to 2 fm. यानी कि minimum find करना है, यानी कि you have to find 2 fm, यानी कि 2 into fm, that is 1.58 into 10 raised to 4, यानी कि this will be 3.16 into 10 raised to 4 hertz will get. ओके तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? विल गेट ऑप्शन ए. विल गेट ऑप्शन ए. If we solve this, we'll get 3.16. Okay. Now the next is if we'll go for the question number 27. 27 क्या हो जाएगा देख लीजिए. You have to find the number of samples. You have to find the number of samples. So यहाँ पे देखिए how many samples required to store a 3-minute performance. Okay, so like we'll like think considering the basics like कि कैसे होगा like sampling frequency is given. Okay, sampling frequency is given. Now you have to find how many samples will be there, how many samples required for storing a 3-minute performance. Okay, तो इसके लिए क्या करेंगे देखिए आप. 3-minute performance means like we have how many seconds will be there? 180 seconds. Okay, like simple है ना. Sampling frequency will be in the unit of samples per second. So like in 3 minutes we have to we have 180 seconds. So simply we will multiply with the sampling frequency now, that is 3.16 into 10 raised to 4. We'll get our answer. We'll get our the number of required samples. So कितना हो जाएगा इसको solve कीजिए and we'll get this. If we'll solve this, we'll get here 5.688 into 10 raised to 6 samples we'll get. So we'll get this option B is the correct. Okay, option B. Sampling frequency we have already calculated in this portion, in this part. Then अगर आपको ये चाहिए तो आपको मिल सकता है. Okay, by multiplying simply with the
3 minutes, that is 180 second, and you'll get this. Now the next is, we have total samples. We have total sample for the 3 minutes is this. If each sample is quantized into this level, okay, if each samples is quantized into 128 levels, it is given like this. यहाँ पे देखते रहिए, मतलब कि एक सैंपल कितने लेवल में क्वांटाइज्ड हुआ, दैट इज 128 लेवल. How many binary bit, how many binary digit would be required to store 3-minute performance? Okay, so we can say here it is simple now, like for one sample, एक सैंपल कितने लेवल में क्वांटाइज्ड हो रहा है, बोल सकते हैं ऐसे यहाँ पे, एक सैंपल कितने लेवल में क्वांटाइज्ड हो रहा है, L is 128, मतलब कि कितना बिट हुआ, 7. So like we can say now कि for by unitary method we can say like this, for one sample we require like 7 bits. Okay, so like for like total samples कितने बिट्स चाहिए, like for like total bits कितने चाहिए, for a store like 3-minute performance कितना bit चाहिए. So like you have to simply multiply with this 7 into total number of samples. Total number of samples कितने हैं, it is 5.688 into 10 raised to 6. So कितने bits चाहिए, कितने bits चाहिए, now simply multiply, you'll get 3.98 into 10 raised to 7 bits. Okay, we'll get this. मतलब कि this is our option C. So we'll go for option C. Okay, ये हो गया आपका. Now ये समझा ना आपको. Now we'll go for the question number 29 and 30. So for 30, 29, 30.
Okay, so did you get the value of, you have to find the maximum bit duration, you have to find. So देखिए क्वेश्चन नंबर 29 and 30 में क्या बोल रहा है देखिए. Consider a PCM multiplexing system using a 256 label. Okay, the label is 56. Label is 56, and like a quantizer for the transmission of the signal. There are three signals: M1, M2, and M3. There are three signals: M1, M2, and M3, whose bandwidth are this. Okay. Assume that each, so here the number of bits are given as a 8 bit. Like what you have to find, the maximum bit duration in microsecond, and then the channel bandwidth required to pass the PCM. You have to find this. सबसे पहले तो आपको फ्रीक्वेंसी लाइक सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी फाइंड करना है. सो लाइक सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पे देखिए. सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी fs इज इक्वल टू 2fm max. समझ रहे आपको, ये 2fm max मतलब कि जो आपका मैसेज सिग्नल का जो फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, इट इज 5mx 10mx 5mx सॉरी 5 10 एंड 5 किलो हर्ट्ज. तो इसमें से जो सबसे ज्यादा है इट इज 10. सो ये हो जाएगा आपका 10 यहाँ से कंसिडर करेंगे एंड विल गेट 20 किलो हर्ट्ज विल गेट हियर सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी. एंड your RB, that is bit rate, is equal to n into fs. Yeah. So what is your n? N is the number of bit, that is यहाँ पे n कितना है, n is the 8, and the number of signals, that is 3. Okay, and fs is already calculated, so your RB कितना हो जाएगा, RB will be equal to 8 into 3 into 20. That is RB कितना हो गया, will get 480 kbps. We'll get this. Okay, so this is your RB, and the bit maximum bit duration will calculate. So this is represented by this TB, and TB is equal to 1 by RB. Okay, TB is equal to 1 by RB. So simply we can calculate by using this formula as a bit duration in microsecond we want. So this is 1 by 480, and this is in kbps now, kbps. So it will be like 10 raised to 3. और microsecond में चाहिए तो यहाँ पे 10 raised to 6 कीजिए. So this will be microsecond. Okay, so if you calculate, you'll get here. You have to simply divide this 1000 by 480. So you'll get here 2.08 microsecond will get.
Okay, we'll get this. So ये तो हो गया आपका मैक्सिमम बिट ड्यूरेशन हो गया, that is a TB. Now the next is we have to find the channel bandwidth. Channel bandwidth, तो what is the bandwidth of PCM? PCM का bandwidth कितना होता है? Bandwidth of PCM, you know, that is RB by 2. That is RB by 2. Channel bandwidth required to pass the PCM signal is RB by 2. You know this formula. So यहाँ से आपको बैंडविड्थ कितना मिल जाएगा? That is 480 by 2, यानी कि 220 किलो हर्ट्ज विल गेट, यानी कि यहाँ पे 240 किलो हर्ट्ज विल गेट 240 किलो हर्ट्ज. ओके, यहाँ तक समझा आपको? Now the next problem is is like a source has an alphabet this with the corresponding probability like this. Okay, so we have to find the entropy of the source. So this is also like simply based on the formula. So you have to find the entropy. So entropy H is equal to, we know this formula, minus summation I is a Pi log raised to Pi. Okay, so this is the formula we have to apply. Okay, so like यहाँ पे देखिए, your P1 is given as a 0.1, P2 is given as a 0.2, P3 is given as a 0.3, and P4 is given as a 0.4. Okay, and you have to calculate like this. H is equal to minus this 0.1 log base 2 0.1 plus 0.2 log base 2 0.2 plus 0.3 log base 2 0.3 plus 0.4 log base 2 0.4. Okay, so like you can simply calculate this. Okay, so if you calculate this, we'll get H is equal to कितना मिला? 1.846 मिला क्या? Did you get this? Yes, it is 1.846. That is the correct. So we'll go for option B. Now the next is this.
So यहाँ पे देखिए, the next question is, now we'll go for this question number 32. यहाँ पे देखिए, the given data we can see here. Voice grade channel of the telephone network is a bandwidth. Bandwidth is given as a 3.4. Okay, bandwidth is given as a 3.4 kilohertz. And the information capacity, what you have to find in 32, we have to find the information capacity of the telephone channel for a signal to noise ratio of 30 dB. 30 dB. Okay. So क्या find करना है? Like bandwidth is given as a this. Bandwidth is given. See here, bandwidth is 3.4 kilohertz. Okay, and signal to noise ratio is equal to 30 dB. Okay, and you have to find the information capacity. Information capacity we have to find. Okay, so यहाँ पे देखिए information capacity. What is the formula for this? You should know the formula for this. So we can calculate like this. What is the formula we use here? So the information capacity or channel capacity का formula is B log here base 2 1 plus signal to noise ratio. Signal to noise ratio. So we have B band. B is the band. It is 3.4 kilohertz and signal to noise ratio in dB as a given as a 30 dB. Okay. Yes, you have to use this Karman capacity formula. You have to use. Yes. So यहाँ से देखिए, but this is not in dB. Okay, this is not in dB. But the given data is in dB, so we have to change. Okay, so कैसे change करेंगे? It is like 10 log 10. This is a signal to noise ratio. This is 30 dB. So like यहाँ से change करेंगे, so यहाँ पे आपको मिल जाएगा signal to noise ratio. This is equal to like 10 raised to 3 is equal to 1000. We'll get this. Okay. So from here we get this C as a P कितना हो गया आपका 3.4 kilohertz. This log 2 1 plus this is 1000. So we'll get this. Okay, so इसको अगर आप calculate करेंगे, we'll get this 33.9 into 10 raised to 3 bits per second. Okay, so ये मिल गया आपका 33.9 into 10 raised to 3 bits per second. So we'll go for option D. Now the next is we'll go for question number 33. So calculate this question.
sorry, calculate this. Okay, so like it is simple now. This time, see, the question is we have to find the minimum signal to noise ratio required to support information transmission through the telephone channel at the rate of this. Okay, so like rate is what? Like your just consider your capacity is given. Okay, capacity is given, and you have to find the signal to noise ratio क्या है, and you have to use the bandwidth the same like this. Okay, bandwidth दिया हुआ है, bandwidth is given like this, bandwidth is given like this, and just consider this is the capacity, or like this is the information rate, or like this is the capacity. Okay, and you have to find the signal to noise ratio in dB. You have to find C, minimum signal to noise ratio. So you can simply calculate this. Okay, please calculate and send me the answer. Okay, so okay, you have to find the minimum signal to noise ratio in dB, and Simran is sending 2.2 dB. Yes, 2.2 dB is correct. और किसी को मिला क्या? चलिए कैलकुलेट किया आपने,
So we'll get this 2.2 dB. This is the correct. कैसे करेंगे सॉल्व देखिए. तो लाइक यू हैव टू यूज दिस फॉर्मूला ओनली. तो यहाँ पे देखिए कैपेसिटी जो दिया हुआ है और लाइक जो इंफॉर्मेशन रेट है that is 4800 है and we have our bandwidth as a 3.4 into 10 raised to 3 and this log here base to 1 plus signal to noise ratio. ओके सो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा. दिस log base to 1 plus signal to noise ratio and this is equal to, इसको किया आपने कैलकुलेट, what will get like 4800 divided by 3400. So we'll get like 1.41. So like we'll get s by 1 plus s by n is equal to like 2 raised to this. So we'll get like 2.66. So like this is signal to noise ratio is 1.66. Okay, we'll get this. So अगर आपको कैलकुलेट करना है सिग्नल टू नॉइज रेशियो इन dB, okay, so what we'll get, we'll get 10 log base 10 this s by n which is not in dB. तो कैलकुलेट कीजिए. So कितना मिलेगा. Okay, so here we'll get 2.2 dB. यानी कि we'll go for option C. चलिए, now the next is first here we'll discuss the previous year questions. Okay, so like GATE 2020. Then we'll go for that remaining questions. Amit is asking 2.66. So 2.66 is the value of 1 plus s by n. Then we'll get s by n as a 1.66. And then we'll change in dB. Okay, because in question it was asked in dB. So now see here. We'll go for question number first here. Try to find what we have to find
a binary random variable x. See, the question is like this. First of all, the given data, the random variable x, a random variable x, okay, takes the value as a +2 and -2, +2 or -2. The probability of +2 as a alpha, the value of alpha, you have to find the value of alpha for which the entropy of x is maximum. Okay, so you can say like we have a random variable x whose values can be either +2 or -2. So we can say the probability of their value as a +2 is alpha. So we have to find the what is the value of alpha for which the entropy is maximum. कैसे सॉल्व करेंगे इसको? Can you tell me what is the value of alpha? Please find this and send me the value of alpha. कैसे करेंगे सॉल्व? So first of all, you should know when will be your entropy maximum. We know now our entropy will be maximum when the probability are equal. When the probability are equal. समझ रहे आपको? When the probability will be equal. So यहाँ पे देखिए we can see here the probability of this +2, like this is the given data. So like probability of this x is equal to 2 कितना है alpha. Okay, and it is said कि your entropy will be maximum. Then you have to find what will be the value of alpha. Okay, so like we can say here the entropy will be maximum, and this will provided probability are equals. Okay, probability are equal. Yes. Yes, 0.5 is correct. Someone said, someone sent this 0.5. Yes, entropy is maximum for equal probability. Yes, correct. So here we can say the probability of this x is equal to 2 is equal to probability of x is equal to -2 is equal to alpha now, which is equal to half. Okay, यानी कि alpha is equal to half, that is 0.5 will get.
So now the next is, now if we'll go for question number 2, we'll go for question number 2. See here, the sorry, see, digital communication system or transmit a block of n bits. The probability of error in decoding a bit is alpha. Okay, the probability of error is given as a alpha. Okay, the error event of each bit is independent of the error events of other bits. Okay, so errors are, like we can say, these are independent. The received block is declared erroneous if at least one of the bits is decoded wrongly. So what we have to find, the probability that the received bit is erroneous is, you have to find this. You have to find this. Okay, how to calculate this? चलिए ये क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए. ओके, क्वेश्चन नंबर 2. So like the given data are like probability of error in decoding single bit. देखिए probability of error in decoding the alpha. So like we can think like this कि अगर probability of error in decoding a bit is alpha, then what is the probability that there will be no error? Okay, so it will be like 1 minus alpha. It is 1 minus alpha. So if the total, if there will be total n bits, so the probability of no error in received block will be like 1 minus alpha into 1 minus alpha into 1 minus alpha up to like n bits, like up to n times. Why? Because this is, yes, D is the correct option. Because we can say these, the errors are like errors occurring is like independence. Okay, it does not depend on other. So that's why it will be like 1 minus alpha up to, yeah, we can also calculate it by that formula, or like simply we can proceed like this. No error के लिए, like for no error uh, up to n times, you'll get 1 minus alpha up to 1 minus alpha power n. So like for error we'll get 1 minus alpha raised to capital N. Okay, so कैसे करेंगे इसको सॉल्व देखिए. So here we can proceed like this, like probability of error in decoding single bit is equal to alpha. Okay, so then probability of error, sorry, probability of no error will be
1 minus alpha. Okay. So there are total n bits are there. Total n bits are there. So that probability of no error in received block कितना हो जाएगा? That is 1 minus alpha, 1 minus alpha up to n times. यानी कि this will be 1 minus alpha raised to n. So this is for no error, the probability of no error. So probability of received block is erroneous is 1 minus 1 minus alpha raised to. Okay, means this is our option. ये समझा? Okay, now ये समझा आपको? Now we'll go for the next problem. So that is question number 3. So here we'll get this option. That is option D. Now I'll get this. Okay. See, this type of question is very important. Okay, this type of question is very important. Try to solve this. Okay, we've already discussed many questions based on this, but ये थोड़ा सा हटके. Okay, but इस तरह के क्वेश्चंस बहुत बार रिपीट होते हैं. Okay.
ओके, सो यहाँ पे सबसे पहले यू हैव टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ओके, यहाँ पे तो आपके सबसे पहले देख लीजिए, यहाँ पे एक फेज मॉड्यूलेटेड सिग्नल दिया हुआ है, फेज मॉड्यूलेटेड सिग्नल एंड frequency modulated signal, this, and the message signal is empty, which is given as a this is the message signal, this is our message signal. uh, Here this kp is the phase deviation constant and kf is the frequency deviation constant. Okay, if the highest instantaneous frequency of this and this are same, okay, देख लीजिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, this is important. Okay, this is important. If the highest instantaneous frequency of phase modulated signal and frequency modulated signal, then you have to find what is the ratio or what is the value of this kp upon kf. What is the value of this kp upon kf? कैसे करेंगे सॉल्व, देख लीजिए। ओके, okay, so try to solve this. Like, this is important point here, like highest instantaneous frequency of phase modulated signal and frequency modulated signal are same. Okay, so like you have to calculate the instantaneous frequency of both the signals and you have to equate that. और आपको फाइंड करना है द रेशियो ऑफ दिस kp एंड ki. चलिए फाइंड कीजिए। एंड सेंड मी द वैल्यू। चलिए हो जाएगा सॉल्व। कैन यू सेंड मी द आंसर अगर किसी ने सॉल्व कर लिया तो। चलिए कैसे करेंगे इसको सॉल्व, देखिए आपके पास phase modulated signal है, that is AC. You can write like this: AC cos 2 pi fct plus kpmt.
We can also write like our frequency modulated signal as AC cos 2 pi fct plus kf integration from 0 to infinity is mt dt. Yes, so someone said 2, that is the correct. And you have to find the ratio. So the ratio is not going to be in second. So 1 second is not correct. 2 is the right answer. Okay. So देखिए कैसे solve करेंगे. It is said ना कि the instantaneous frequency are equal. Instantaneous frequency are equal. So यहाँ पे देखिए. और यहाँ से अगर हम instantaneous frequency calculate करेंगे phase modulated signal का, that is fi, so this will be equal to like 1 by 2 pi d by dt theta it. Okay, so this whole will consider as a theta it. Okay, तो कितना हो जाएगा आपका 1 by 2 pi, and this will be 2 pi fc plus like kp d by dt mt, we can say. After differentiation we'll get this, so like fi will be fc plus kp by 2 pi d by dt mt. Okay, so like this is our the fi for the phase modulated signal. Now we'll go for this fm signal का instantaneous frequency. So यहाँ पे again we'll get this fi is equal to 1 by 2 pi d by dt, and यहाँ पे this is our theta I this time, this will be our theta it. So यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, this is 2 pi fct plus kf, this is integration from 0 to t, this is m tau, this is t d tau. Okay, तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, we'll get here this is 1 by 2 pi, यहाँ पे 2 pi fct, sorry fc plus if we'll differentiate the integrate, so it will cancel, like यहाँ पे आपको मिल जाएगा kf mt. So आपको simply this fi will be equal to, यहाँ का instantaneous frequency will be like fc plus kf upon 2 pi mt. So it is said now in the in question it is said the highest instantaneous frequency. तो highest instantaneous frequency are same है, तो यानी कि fc plus kp upon 2 pi d by dt mt, इसका maximum value is equal to, इसका maximum value is equal to fc plus kf by 2 pi mt का maximum value, ये दोनों सेम इक्वल है. ओके, ये होगा ऐसा. So यहाँ पे देखिए we can see here this fc will be cancelled. Okay, so यहाँ पे आपको मिल गया kp by 2 pi, this d by dt mt max is equal to kf by 2 pi, this mt का max value. यहाँ पे this 2 pi will also cancel and we'll get this. Now see the message signal and you have to tell कि d by dt mt का maximum value कितना हो जाएगा. First of all tell me कि mt का maximum value कितना है. mt का maximum value that is 10 now, it is 10, so like it is simple कि mt का maximum value is 10. Now ये देखिए यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो जाएगा. देखिए
यहाँ पे what is the slope of this line, this line, it is 5, the slope is 5 और इसका स्लोप कितना है -10। तो जब इसको डिफरेंशिएट कर देंगे तो विल गेट लाइक दिस, 1 से 3 के बीच में, 1 से 3 के बीच में विल गेट एम्पलीट्यूड ऑफ इस 5 एंड 3 से 1 से 3 में 3 से 6 के बीच में वैल्यू इज 0, 7 के बीच में और इज -10। ओके, सो दिस इज योर डी बाई डी टी एम टी। ओके, ये हो गया इसका ग्राफ। तो जब इसका मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करेंगे तो कितना हो जाएगा? जब इसका मैक्सिमम वैल्यू, इफ यू गो फॉर मैक्सिमम वैल्यू, सो व्हाट इज दिस? दिस इज 5 नाउ। ओके, like if like this is -10, it's there is only two value or like three value you can say, 5, 0 and -10, so the maximum is 5, so we'll go for 5. So यहाँ पे देख लीजिए, kp into this 5 is equal to kf into this 10, so kp by kf we have to find is equal to 2. Okay, we have to find this ratio. So कितना मिल गया आपको? 2 will get. ओके, ये हो गया आपका, ये समझा? So now the next is, I will go for the next problem, and it is, so this. So try to solve this. इसको कैसे solve करेंगे? Try to solve this. And tell me which option is the correct.
So this is the whole solution. Okay, if you have doubt, then you can ask, and let's solve next question. Okay, so now the next problem we have to solve is this question number 4. सो इस तरह के क्वेश्चंस पे बहुत बार पूछे जाते हैं. ओके, सो लाइक यहाँ पे ओके सिमरन इज सेइंग क्वेश्चन आंसर ऑप्शन ए इज करेक्ट. ओके, विल चेक. और किसी को मिला क्या कुछ? बाकी लोगों को क्या मिला? चलिए कैसे सॉल्व करेंगे देख लीजिए. ओके, सो हियर दिस इज द मल्टीप्लायर ना. This is the multiplier. So xt, the message signal m of t is this. The message signal, and the modulated signal is this. The signal xt is passed through the demodulator. The output of the demodulator is okay. So first of all, we have to find x of t. Okay, xt कितना है आपका? यहाँ पे देखिए. ओके, देखते हैं. Someone is saying B is the correct option. Okay, so first of all, we have to find x of t. X of t is equal to mt cos 2 pi fct. Okay, and the value of fc is equal to वन मेगाहर्ट्ज. So यहाँ पे देखिए mt is given as a, and mt is given as a 4 cos 1000 pi t. Okay, this is our mt. So xt कितना हो जाएगा? xt will be your 4 cos 1000 pi t into cos 2 pi fct. ओके, ये हो जाएगा आपका. यहाँ पे देखिए.
सो xt हो जाएगा आपका, we can write here this as a 2 cos 2 pi, will take the common, and this will be fc plus, if I take 2 pi common, so it will be 2 pi. So 500 will be there, 500 t plus cos 2 pi fc minus 500 t. This, it will be like this. So this is your xt. This is your xt. Now, when it will multiply with this, when it will multiply with this signal, तो देखते हैं क्या होगा. तो just consider कि आपका this is your some ZT. Just consider कि यहाँ पे आपको ZT मिल रहा है, तो ZT क्या हो जाएगा, well, we consider like this, 2 cos 2 pi fc plus 500t plus cos 2 pi fc minus 500 t into cos 2 pi into fc plus 40t, like this. Okay, ऐसा कर सकते हैं. So this will be like this. It will be like इसको देखिए, जब यहाँ पे इन दोनों, इनको लेंगे, इसको और इसको, तो क्या कितना हो जाएगा, देखिए. It will be like this. Now, so like we'll apply the formula 2 cos a cos b. So like 2 is also going to vanish, like, so we'll get here cos. So finally we'll get cos. So it's a summation. Okay, it's a summation will be like 2 pi. We can take common from both. So we'll get like 2 fc plus 540 t. Okay, plus cos 2 pi. So like this time we will subtract. Okay, so it will get, we'll get here 2 pi into, so like 500 minus 40 will be 460 IT. Okay, so I'll get this, and now we'll go for this. इसके लिए और इसके लिए तो क्या हो जाएगा, देखिए. Again we'll get here cos 2 pi, and if there will be summation, so here will 2 fc minus 460 plus, it will be like cos 2 pi, and there will be minus, so minus 500 minus 40 will be so like minus, so minus को हटा सकते हैं, so it will be like 440 into t. Okay, ये हो गया आपका. Now the important thing is you have to observe this low pass filter first before sending the signal. तो यहाँ पे देखिए, जो लो पास फिल्टर है, इसका कट ऑफ फ्रीक्वेंसी कितना है, दैट इज 510. कट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज 510, मतलब कि 510 से ज्यादा, 510 से ज्यादा का फ्रीक्वेंसी को नहीं अलाउ करेगा. इट विल नॉट पास थ्रू दिस फिल्टर. सो यहां से देख सकते हैं,
So this FC is going to be very large, like in like megahertz. So इसको पास नहीं करेगा, इस पूरे like इस सिग्नल को पास नहीं करेगा. Again, what is the frequency for this portion? इसको इसके लिए क्या है फ्रीक्वेंसी? इसका फ्रीक्वेंसी इज 460. ओके, इट्स फ्रीक्वेंसी इज 460. मतलब कि जो आपका लो पास फिल्टर है इसको अलाउ करेगा, इसको पास कर देगा. सिमिलरली इफ विल गो फॉर दिस, द नेक्स्ट वन, इसको भी पास नहीं करेगा, इसको भी पास नहीं करेगा. इट्स फ्रीक्वेंसी इज लाइक वेरी वेरी लार्ज, लाइक 2 FC के आसपास. So like that is going to like 2 megahertz. So 2 megahertz is very large. ये सिर्फ 510 हर्ट्ज के फ्रीक्वेंसी को ही पास कर पाएगा. और इसको यहाँ पे देखिए, इसका फ्रीक्वेंसी कितना है? अगेन फॉर दिस ऑल्सो here the frequency is 450, but the cutoff frequency is, sorry, here the frequency is 540, the cutoff frequency is 510. So again, this is not going to be passed through the low pass filter. So we can say the filter output, that is yt, which is equal to yt कितना हो जाएगा आपका? Will get the cost. Uh, so like 920 pi t. Okay, so we'll get this 920 pi t. मतलब कि we'll get option B, 920 pi t. So option B is the correct. Okay, so these are the questions from like previous year only, like 2020 only. So इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे. ओके, सो अब हम लोग एक दो क्वेश्चंस और देखते हैं. Okay, now we'll go for this question. Okay, so solve this question and tell me what is the correct option. What will be the option? What is the correct answer? Anybody?
So did you get option A? Okay. Okay, आपको ऑप्शन ए मिला. चलिए देखते हैं, चेक करते हैं. What is the formula for calculating this? So like we have a formula, like simple formula we have. So this is we can say like Py is equal to simple, like यहाँ पे, or like simply we can write like this: P or y1 P y2 is equal to, here the probability of receiving y1 when transmitting x1, probability of receiving y2 when sending x1, probability of getting y1 when sending x2, probability of receiving y2 when sending x2, into probability of x1, probability of x2. Okay, we'll simply apply this formula and then we'll see. You have to calculate P y1 and P y2. यहाँ पे देखिए, and this P x1 and P x2 is given. Okay, and from this, like what is this? This 0.7. This represent the probability of receiving y1 when sending x1 is equal to 0.7, and the probability of receiving y2 when sending x1, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? ये इसको, ये ओके, ये लाइन, ये देखिए ऐसे, ये जो डायगोनल लाइन. ओके, तो ये किसको, ये क्या बता रहा है? दिस इज 0.7, 0.3, सॉरी. Similarly, probability of receiving y1 when sending x2 is equal to this another diagonal, another diagonal. So this is 0.4, and probability of receiving y2 when sending x2 is equal to 0.6. ओके, ये हो गया. तो ये इसको ऐसे हम लोग लिख सकते हैं, 0.3, 0.4, 0.6, and this px1 is given as a 0.5, and this is also 0.5. Okay. So
ओके, सो यहाँ पे आपको ये मिलेगा, आपको 0.20 प्लस 0.30. ओके, सो लाइक we'll get here 0.5 and 0.5. Okay, so it is not given in any option. Like we are getting 0.5, 0.5. So कहाँ पे ऑप्शन करेक्ट है क्या? आपको ए मिला क्या? तो there is करेक्शन, लाइक यहाँ पे ऑप्शन में तो 0.5 नहीं दिया हुआ है, एंड this is probability of getting y2, probability of getting y2 when x2 is sent, sorry, x1 is sent is equal to 0.3. This. So I think this data is changed. यहाँ पे आपको क्या रहना चाहिए? यहाँ पे 0.3 रहना चाहिए और यहाँ पे 0.4 रहना चाहिए to satisfy the data, to satisfy the like options. अगर ऐसा नहीं है then we'll get 0.5. और अगर ऐसा है, so here we'll put 0. Here we'll get 0.4 और यहाँ पे 0.3. तो इस केस में आपको मिलेगा कितना? यहाँ पे विल गेट 2, सो विल गेट हियर 0.55 और यहाँ पे 15 दैट इज 0.45. ओके, so like we have to reverse, there is some misprint. Okay, so this type of question, like this is also important question. इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, like from like इस तरह के टॉपिक से, इस लाइक ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं रहेगा. वी हैव ओनली लाइक देयर विल बी देयर प्रोबेबिलिटी विल चेंज और थोड़ा सा सम यू कैन आल्सो कंसीडर लाइक दिस. There will be some symmetrical or like unsymmetrical कॉन्सेप्ट घुसा आएगा इसमें. तो ये है आपका इस तरह का क्वेश्चन. ओके, तो यहाँ पे ऑप्शंस मैच करने के लिए फॉर द ए ऑप्शन यू हैव टू रिवर्स द डेटा. तो यहाँ पे जो आपका probability of getting y2 when x1 is received, this should be 0.4 and this should be 0.3. Then only we'll get this option A. Unless we'll get 0.5, which is not in any option. Okay, so ये हो गया. Now can you like you can tell me any option if you have, or any doubt if you have, then you can send me. Okay, ये समझा इस तरह का क्वेश्चन. You can also take some other related to this, but this is the basic. Okay, अगर ये समझ रहा है तो आप इस तरह के क्वेश्चन कर सकते हैं. चलिए, कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, भेज सकते हैं यहाँ पे. Unless I will
Here only. चलिए कोई डाउट नहीं है, then we'll end here only. Okay, thank you.